व्याख्यान सीरीज के क्रम में आज दून विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव और कई देशों में जिन्होंने भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया, ऐसी महान शख्सियत और आईएफएस 1982 बैच की आईएफएस अधिकारी मैडम प्रीति शरण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में जैसा हम सब जानते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कई तरह के ग्रुप्स हैं। ऐसे सारे प्रावधान शेरपा और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ट्रैक हैं, दोनों ट्रैक के अंतर्गत इनको समाहित किया गया है और महिला शक्ति, मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में वीमेन लीडरशिप, और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है कि प्रायोरिटी इज टू बी गिवन वीमेन लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसी के तहत आप देखेंगे कि कॉरपोरेट को किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा नेतृत्व दिया जाए और समाज में मातृशक्ति कैसे समाज का नेतृत्व करे, इन दोनों का साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में मैडम अलका मित्तल जी, फॉर्मर CMD ONGC, बहुत जोरदार तालियों के साथ मैडम का अभिनंदन करेंगे। आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम, जो साक्षात मां सरस्वती का वरदहस्त जिन्हें प्राप्त है, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के शिखर की ओर अग्रसर है, और आपकी सक्रियता, आपके नेतृत्व के कारण उत्तराखंड के से एकमात्र दून विश्वविद्यालय को जो 75 इंस्टीट्यूशंस देश के लिए गए यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत 1 दिसंबर 2022 को जब ऑफिशियल टेक ओवर था प्रेसिडेंसी का, हम लोगों ने भी वर्चुअल मोड में उसको अटेंड किया आपके नेतृत्व में। यह विश्वविद्यालय का सौभाग्य है, हमारे विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षक साथियों का, ऐसी माननीय कुलपति महोदय का सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आपका दायित्व इससे और भी आगे है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर समाज के अंधकार को भी दूर करने की जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से जो कॉमन सिविल कोड बनेगा देश के लिए, एक राष्ट्र एक, अब तो पूरे विश्व को एक करने की जुगत में हम जुड़े हुए हैं। तो इसलिए पूरा समाज एक दृष्टि से सोचेगा, एक राष्ट्र एक दृष्टि से सोचेगा, तो मानवता का संरक्षण होगा, मानवता विकसित होगी, मानव मूल्यों की संरक्षण हम लोग कर पाएंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे बीच में महान कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, कोरोना के दौरान आपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार को वर्चुअल मोड में आपका संबोधन और आपका जो शोध है वो देखने को मिला। साइकोलॉजी के विद्वान जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, हमारी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें सोच को ठीक करना है, कॉग्निशन को, हमारी सोच, कॉग्निटिव साइंस, साइंटिस्ट जो लोग हैं कॉग्निटिव साइंस के, राजेश जी और वो होंगे हमारी सविता मैडम। ऐसे कई बीमारियां हैं जो सोचने के कारण भी हो जाती हैं, और इन सोच को साइंटिफिकली कैसे आप ठीक कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, इस पर काम है प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता साहब का। बहुत ही ये कह सकते हैं हम कि ज्ञान तो होगा ही, लेकिन कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें आज के इस दौर में, इतनी आपाधापी में, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन की, इतनी कठिनाइयां हैं, उसके बावजूद भी हमें प्रसन्न रहना है, स्वस्थ रहना है। लेकिन जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी सही होगा, हमारा विचार भी सही होगा। इस पर हम सबका ज्ञानवर्धन करेंगे प्रोफेसर मोहित गुप्ता साहब। जोरदार तालियों के साथ दुनिया के महान कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का अभिनंदन करेंगे। और इस पूरे G20 कनेक्ट जो प्रेसिडेंसी देश को मिली है, इसमें विश्वविद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को जोड़ें, विद्यार्थी आगे आएं, यूथ कनेक्ट कैसे हो, ऐसे इन सारे कार्यक्रमों की सूत्रधार डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमन गुप्ता जी, महान अर्थशास्त्री हैं, आपका जोरदार स्वागत करें तालियों के साथ। RIS संस्था के माध्यम से आप उसके सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, आप उसके राजनीतिक सलाहकार और हर तरह के
इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी प्लानिंग पॉलिसी में आप जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, G20 प्रेसिडेंसी में विमेन ग्रुप का है, यूथ ग्रुप का है, तो यूथ का प्रतिनिधित्व करती हैं मैडम नियति सिंह जी। आप देख रहे होंगे IIM कोलकाता की आप एलुमनाई हैं। कॉरपोरेट में जाती करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता, लेकिन राष्ट्र निर्माण में आपने कॉरपोरेट को त्याग करके आप लगे हुए हैं इसी कार्यक्रम में। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ी प्रेरणा का काम करेगा। आपकी उपस्थिति जोरदार तालियों के साथ मैडम नियति सिंह का अभिनंदन करेंगे। लेकिन जो भी घटनाक्रम देश के अंदर हो, देश के वैज्ञानिक जो कार्य करें, किसान जो करें, मजदूर, हमारी माताएं, हमारे बहन, हमारी पूरा समाज जो करे, उसको विश्व के क्षितिज पर ले जाने का कार्य है मीडिया का। ऑनलाइन हमारे स्कूल ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज के प्रोफेसर और विद्यार्थी इसको ऑनलाइन लाइव ये प्रोग्राम पूरा रहेगा। लेकिन इसको लेखनी के द्वारा, क्योंकि दुनिया को भी हमारा काम है शिक्षित करना, दुनिया को साक्षर करना, दुनिया को जागरूक करना, उनको बताना अपने दर्शन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में। इसका दायित्व का निर्वहन करने के लिए मीडिया के प्रोफेसर हर्ष डोभाल जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान है। जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर डोभाल साहब का आप अभिनंदन करेंगे। ये अपनी लेखनी से समाज को जागृत करना है अपने भारतीय दर्शन और साहित्य के बारे में, हमारे चिंतन के बारे में। इसी के साथ आप सभी अतिथियों का मंच पर बहुत स्वागत। मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ माननीय अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि दीप प्रज्वलित कर इस G20 जो यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रीति सरन मैडम, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम, अलका मित्तल मैडम, डॉक्टर प्रोफेसर मोहित गुप्ता जी, डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमान गुप्ता जी, प्रोफेसर हर्ष डोभाल जी, मैडम नियति सिंह जी। यति बरतोलो माताजी उपायो रे, यति बरतोलो माताजी उपायो रे, गौरी का पुत्र बलिहारी, गौरी का पुत्र बलिहारी, बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे, रंग लायो फूल के देव शोभलो, रंग लायो फूल, रंग लायो फूल महादेव शोभलो, रंग लायो फूल, हो रंग लायो फूल, हो रंग लायो फूल, हो रंग लायो आप सभी को ज्ञात होगा कि 26 जनवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक उत्तराखंडी टोपी को अपने शीश पर धारण किया था। आज इस शुभ अवसर पर मैं दून विश्वविद्यालय की ओर से हमारे माननीय अतिथियों को भेंट स्वरूप एक पौधे के साथ यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंडी टोपी प्रदान करना चाहूँगी। प्रोफेसर RP ममगई, डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस से निवेदन है कि हमारी आज की प्रमुख वक्ता श्रीमती प्रीति सरन को सम्मानित करने के लिए कृपया मंच पर आएं। प्रोफेसर ममगई। प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम, स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंसेस से निवेदन है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ONGC डॉक्टर अलका मित्तल को सम्मानित करने के लिए कृपया मंच पर आएं। प्रोफेसर अरुण कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से निवेदन है कि डॉक्टर मोहित दयाल गुप्ता, जो वर्तमान में GB पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्हें सम्मानित करने के लिए कृपया मंच पर आएं।
मैं डॉक्टर मधु बिष्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से निवेदन करना है हमें कि हमारी कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल मैम को सम्मानित करने के लिए कृपया स्टेज पर आएं। प्रोफेसर एम.एस. मंदिरवाल रजिस्ट्रार दून यूनिवर्सिटी हमारे सलाहकार आर.आई.एस. डॉक्टर अंशुमन गुप्ता को सम्मानित करने के लिए कृपया मंच पर आएं। प्रोफेसर एम.एस. मंदिरवाल, प्रोफेसर सुधांशु जोशी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेसर अंशुमन गुप्ता को सम्मानित करते हुए अब मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर राजेश भट्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हमारे सलाहकार आर.आई.एस. मिस नियति सिंह को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर आए। और आखिर में प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैं निवेदन करूंगी कि प्रोफेसर हर्ष डोभाल स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन को सम्मानित करने के लिए कृपया स्टेज पर आएं। We once again welcome you all to this lecture series of the G20 University Connect, which is being held in context with India's G20 presidency. Doon University takes great pride in organizing this program as well as being a part of this celebration. I am Yukta Mandral, a student from the Department of Economics, and on behalf of the university, I would like to thank the dignitaries, senior academics, and all our guests for their presence and time. Now we shall commence with the G20 video. Please commence with the G20 video. Volume. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from challenges. The lotus, the national flower of India, represents our history and culture and symbolizes spirituality, fruitfulness, wealth, and knowledge. And that's the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023. Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future.
a theme that brings the G20's focus on shared global growth, while being in harmony with nature. G20 India 2023. One Earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। Namaste. A very good morning to our distinguished panelists and the gathering at large. I'm Anahita from the Department of Economics, and I take the honor in warmly welcoming you all once again to the G20 University Connect program hosted by Doon University. As we just saw the mystical and the enchanting video of India's G20 presidency, we shall now commence the program. May I please invite Professor Surekha Dangwal ma'am, Vice Chancellor Doon University, to present the welcome address. Good morning to all of you. A very warm welcome to this second day of the celebration of G20 presidency. I extend a warm welcome for today's guest, Dr. Mohit Gupta. He is Professor of Cardiology, GB Pant Hospital, New Delhi, and we all are acquainted with him as we had his lecture, very famous lecture. We uploaded it on our website, and very exciting and good reviews came to Doon University about that lecture, and it helped us in reducing our stress during COVID-19. So a very warm welcome to Dr. Mohit Gupta. He is here today with us in person. We have Dr. Preeti Saran. She is Ambassador and former Secretary East in the Ministry of External Affairs and former Ambassador India. Very warm welcome to you, ma'am. G20 is highlighting a theme of not only women empowerment in India, but women-led empowerment or women-led development as initiated by Honorable Prime Minister of India. We welcome a very powerful and empowered lady, Preeti Saran ma'am, today with us. We have Dr. Alka Mittal. She is former Chairperson and Managing Director, Oil and Natural Gas Corporation Limited. She has accepted our invitation. She is with us. It is my proud privilege to extend a very warm welcome to you, ma'am. Dr. Anshuman Gupta, as I yesterday revealed that we are among the 75 institutions of the country to be selected to celebrate this grand event and this collective celebration of India's soul, India's philosophy, India's cultural heritage. And Dr. Anshuman Gupta is instrumental in doing so. He's consultant RIS, Ministry of External Affairs, and given a chance to connect the youth of India and to understand what it means to be the president of this powerful group of 20 countries of the world. So a very warm welcome and a heartfelt thanks to Dr. Anshuman Gupta. We have a young girl, Niyati Singh. She is also consultant RIS, very vibrant, very lively, and what opportunities are there for the youth. Student अब केवल साइंस लेना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया. ये एक कोई नई तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ गई कि आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं. जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं IITs में जो इस्टेब्लिश हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश है, वो आपके आइडिया को इंक्यूबेट कर रही हैं, आपकी डिग्री को इंक्यूबेट नहीं कर रही कि आप किस डिग्री से हैं. तो आपकी कला, दैट इज स्किल, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हमारे यूथ को समझाया कि किसी भी आप सब्जेक्ट में ये मत बोलिए इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं और वो किसी डिग्री की बंधक नहीं है. ये एक फलक है, ये एक पूरा होराइजन है जो हमारे आगे बिखरा पड़ा है. हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहती हूँ. और ये जो G20 की थीम अभी बताई, 7 petals रिप्रेजेंटिंग 7 continents, 7 seas,
और बहुत बड़े उसमें एक ऐसा लगता है हाथ में हमने ग्लोब लिया है कमल के रूप में, एंड दिस लोटस रिप्रेजेंट्स आवर एंशिएंट कल्चर, आवर फिलॉसफी, आवर स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, सबको एक में समाहित करना। इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहां पर एक एक चीज के लिए लड़ाइयां हो, ऐसा हमारा एंशिएंट कल्चर नहीं कहता है। वी आर द कंट्री की एक, आपने अपने घर में यही सीखा कि कुछ भी है सब लोगों में आप बांट के खाइए, शेयरिंग की, जो बाद में एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड में किताबें छपने लगी, वेस्टर्न राइटर्स ने छापी कि पेरेंटहुड कैसा होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वो शेयरिंग की जो आदत डाली कि जो आपका है आपका बाद में है, पहले सबका है। तो अहम से वयम की जो यात्रा इंडियन एस्थेटिक्स में है वही वसुधैव कुटुंबकम है, और पूरा विश्व भारत को देखता है एक समाधान के रूप में। तो समाधान जो टर्बुलेंट टाइम का मैंने आपको बताया, डिफिकल्ट टाइम है, जब आप पूरे डेवलप्ड कंट्रीज का जो फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट है, हु डिसाइडेड दैट वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये जो हेजेमनी है किसने डिसाइड करी? तो जैसे हम सब्जेक्ट की बाउंड्रीज, डिसिप्लिन, जिसका नाम ही डिसिप्लिन था कि आपने बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है अपने सब्जेक्ट तक, वो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की ओर चला गया। वैसे ही सारी बाउंड्रीज ब्लर्ड होती है। इस ओल्ड एज जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम का, बहुत पता नहीं कितने साल पुराना, ऋग्वेद से निकल के आया और हम लोगों के बीच में कि कॉन्फ्लिक्ट से कभी समाज नहीं बनेगा। समाज हमेशा सामूहिकता से बनता है, सहजता से बनता है और सहयोग से बनता है। तो ये सेल्फहुड की जर्नी का टाइम भी है, और सारे लोगों को हाथ पकड़कर कलेक्टिव रूप से, नॉट ओनली टू सेलिब्रेट, टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली द यूथ। India is a young country, India is a young country, so not in only exclusively in the Western paradigm, we have to think about our own paradigm, having a relationship with nature, ethical relationship with nature. So जो हमारा नेचर और डेवलपमेंट, प्रकृति और विकास का फॉर्मूला है, जो सहयोगात्मक फॉर्मूला, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ फल अपने के लिए नहीं देता, नदी अपने के लिए पानी नहीं देती। तो ये सारा जो मूल में हमारी सेइंग्स में है और हमें बचपन से बताया जा रहा है, इसमें केवल एक भाव है कि व्हाट इज आवर अकाउंटेबिलिटी फॉर द सोसाइटी। आज जो सारे लेक्चर्स हैं, जो सारे लोग हैं, दे स्टैंड फॉर दैट ओनली। मोहित गुप्ता जी का आपने सुना है कि इट इज समथिंग वेरी मिराकुलस हैपनिंग इन आवर बॉडी ऑल्सो एज फार एज साइंस इज कंसर्न। हम अब केवल इलाज के लिए नहीं बात करेंगे G20 में, हम आरोग्य के लिए बात करेंगे G20 में, कि हम बीमारी ना हो तो कैसा हो। क्या ये संभव है? मोहित गुप्ता जी बताएंगे, ये संभव है। सो इट इज ऑल विद नेचर, विद कॉस्मोस, विद फिलॉसफी, विद कल्चर, विद आवर लाइफ स्टाइल, विद मॉडर्निटी। जो कल एक बच्चा सवाल कर रहा था कि अगर ये सब होना था तो हम लाए क्यों उधर से इतना कुछ। With modernity, that is very, very important, because you cannot share with your student की go back to nature, जैसे रूसो ने कहा था कि समय आ गया प्रकृति पे वापस चलो। So what do you mean by it? प्रकृति पे वापस चलो, रूट्स को मत छोड़ो, जहां से चले थे और जहां पहुंचे उसके बीच की यात्रा के हर पड़ाव को याद रखो। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया पे आने का मतलब ही ये है कि हम अपने लाइवलीहुड, अपने लाइफ स्टाइल और अपनी नेचर और अपनी रूट्स से जो कुछ इंडिजिनस तरीके से सीखे थे उसको अपनी लाइफ स्टाइल में लाएं, आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल से ज़्यादा दूर रहें। और क्या ये एक समाधान बन सकता है ओवर कंज्यूमर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की एक तरह से देन थी हमें, और बहुत ज़्यादा मार्केट का ग्लोरिफिकेशन, बहुत ज़्यादा पैसे का ग्लोरिफिकेशन, कि उसके अलावा आप जी नहीं सकते। तो क्या उस फिलॉसफी को रिविजिट करने की ज़रूरत है, विद अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद मॉडर्निटी। ये सब के लिए ये G20 के 2 इवेंट सार्थक होने जा रहे हैं, और पूरे देश में जितनी जगह से भी G20 के हमें इनविटेशन मिलते हैं, कोई लाइव होता है,
We will be sharing them with our students so that they can also understand what is happening in Delhi University. On 10th, Delhi University is also having the same program of G20 in the evening in Kirodimal College. They are giving us the live link for that, and we will share it with you. I'm really, really thankful to our mass communication department, the HOD, Dr. Rajesh Kumar, and his team. Dr. Nitin is there, Sachin is there, and the girls and boys are there. उन्होंने कल भी इसको लाइव चलाया, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइव जुड़े हैं, और आज हमारे साथ फिर से लाइव जुड़े हैं सारे लोग. तो इसके लिए मास कम्युनिकेशन की यंग टीम, वाइब्रेंट टीम और उनके फैकल्टी प्रोफेसर्स को मैं यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ. और सब लोग हमसे जुड़े रहें, और जो कुछ आज यहाँ से आप बताएंगे उससे आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, और इंडिया की ताकत का, इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप का आपको एहसास होगा. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am, for your remarkable welcome address. As ma'am mentioned, today among us we have some of the brightest minds of our country who have been known for their relentless dedication and leadership skills in their respective fields. It is an honor to have this opportunity to address such a distinguished and learned audience. With special emphasis on the engagement of the young minds through this platform, we are intently anticipating the approaches and suggestive measures that will be conferred to us through the upcoming lectures, thereby helping us leverage this opportunity to brainstorm innovative ideas and solutions. I now extend a warm welcome to Dr. Anshuman Gupta, currently working as a consultant in research and information system for developing countries. Sir has played a pivotal role in planning this event. We are privileged to have you amongst us, sir, and I request you to take the stage to present your lecture. Yeah, good morning to all. In fact, today I'm not here to present any lecture. Today my job is different because the lectures will be given by the eminent speakers, the lead speakers, and the other subsequent eminent speakers. Honorable Vice Chancellor, Madam Ambassadors, Deans, faculty members, and my dear students. You know, I will be talking about three things today regarding G20. One is the relevance of G20 and its origin, how basically it has emerged in the world scene. Second, I will be talking about the relevance of this G20 University Connect series. And thirdly, I will be talking about what is the relevance of this Indian presidency. While talking about the relevance of G20 Forum and its origin, it has become a history and you must have read about it at the cost of revision and repetitions to many. I just want to, give you some brief about it. You know, it was conceived first of all in 1999 and established in 1999 in the wake of Southeast Asian crisis, which occurred in countries which were supposed to be the tiger economies of the world at that point of time. They felt the mare down, and this developed world, especially the G7 and its led institutions, which we established after the Second World War, they felt that they would not be able to contain the damage triggered by this Southeast Asian crisis. They wanted to take the developing countries along, and this is how the G20 came into being in 1999. At that point of time, this was the forum for the finance minister and the central bank governors to deliberate on issues relating to international financial sector, how it can be made more robust, so that this kind of events like South Asian crisis did not reoccur.
they devised the combined stimulus package on the fiscal and the monetary policy just to contain the damage, because they were thinking that there will be a, this had the potential to spread, to engulf the whole world. And they wanted to, control the shrinkage of the world economy. I mean, it is how basically they avoided it by devising the stimulus package. After doing it, it went into the sleeping mode. It became inactive. And again, it was revived in year 2008. Again, in the wake of the crisis, and this time the crisis occurred in US, as you know, the subprime crisis. The US, which is supposed to be the epitome of capitalism, neoliberal policies, it occurred to them, and they thought that they are not going, basically they have overcome the crisis, the financial crisis, I mean, through financial engineering. They thought that now this crisis, this cyclical downturn is basically no more. So, I mean, they also felt the subprime crisis, and, they were again fear, and, this time the enormity of the problem was bigger than what we felt in South Asian crisis time. So they again felt the need of the G20, and they again revived it. This time, in 2008, it was elevated to the status of, head of the states. And 2009, it was designated as the premier institutions to deal with the world problems for economic cooperation, especially. Earlier, the ambit of, G20 was very limited. The financial issues as well as macroeconomic issues relating to the financial sector. But later on, progressively, its ambit was increased to include further issues which the world is confronting, be it, trade issues, macroeconomic issues, health issues, environmental issues, meeting the SDGs, Sustainable Development Goals, how to accelerate it. So it is how basically it came into being. I mean, it again revived. So while coming to the relevance of it and how it is different from the earlier institutions, which was basically the Western world led and which was established earlier after the Second World War, by the victorious country. I mean, the relevance of it, first time it was shared by, it was the amalgamation of developed and the developing country. The developing country, first time they shared the high table, and they could raise their issues which were pertaining to them. Though, I mean, up till now, it was hogged by the issues which were basically the Western-oriented issues, but, for the last presidency, when the presidency was with Indonesia, and from now onwards, and the next two presidency, which is going to be with developing country. Now, I mean, we are hoping that the developing country issues which are favorable to the developing country and which basically serve the interests of the developing country, they will be raised. So, but the functioning of this G20, it is more democratic. It is more participatory, and the event, every year the summit is organized on the rotation basis. So this is the relevance of G20. While talking about the second issues, the relevance of the G20 lecture series, I mean G20 University Connect lecture series. This is also unique to India. Our Honorable Prime Minister, they thought why we should not involve the youth, why we should not involve the students, which is the strength and which is basically going to be the future leaders. Because these students, they will be working in different capacities, in different forums, nationally and internationally. Why right from the beginning, from their youth, their mind should be invoked, so that,
something is churning out at the back of their mind, and they started thinking what can be the solutions. And as you know, the younger mind, they can give the out-of-box solutions. So I mean, the idea is to take it to the grassroots level, to make it more participatory. And this is how this idea was conceived, and RIS with the Ministry of External Affairs, it is implementing this University Connect in 75 universities. Its relevance lies more in case of India, because India is expecting to exploit the demographic dividends, because our, this populations, the youth population, this is the largest. And if we are able to exploit it properly, because simply populations and the youth, it does not make any sense unless they are basically educated. The human capital, I mean, unless basically we are able to nurture the human capital in them, I mean, this is not going to provide the dividends. So this is the relevance of this G20 University Connect series. While talking about the last and the final point, the relevance of its Indian presidency, as I have told you earlier, India has always been very vocal and champion of raising the issues relating to developing and the least developed country in different forums, be it the trade forum, WTO, be it climate forum, be it every forum, even in the political forum also. So though Indonesia was also a developing country, the same hope was raised at that point of time, but it was mired by, at the height of the pandemic, as well as, the Ukraine war. So that could not be realized in a much measure in that way. But this time, because India always has been vocal, so there is a great hope from the countries of the South, the developing country and the least developed country, basically who has to meet their sustainable development goal. Because if we talk about a sustainable development goal, the maximum goals they have to meet their goals in terms of hunger, in terms of poverty. So they have still to realize the benefit of development. So this is how basically the importance of this G20 presidency lies, that India is going to raise the issues which are favorable, which are pertaining to developing and the least developed countries. I give you one example. For example, the climate change and environment is a very important issue nowadays. It is basically important that, it has a survival question, It is posing a survival question to everybody. And we have reached to a level where every country is supposed to act, because this is a global problem. It needs to be solved by the global corporations. But this issue also involves the issue of fairness and justice. Because one fit for all tool is not going to work. Because when you talk about the justice and fairness, then definitely you have to basically take into consideration the need of the countries who has not seen even, up till now, the development. Especially the least developed country. I'm not talking about India. India is still far ahead. Though, we are still has the major portion who are still below the poverty line, but still, we can manage. But since this is an international forum, and India has always played the role of raising the issues pertaining to the developing and the least developed country. This is how
the relevance of India came into being. You know, in the climate issues, when we talk about the justice and fairness, I give you one example. You know, the carbon space, the carbon budget. Nobody talks about the carbon budget, I have been, seeing the declarations, but nobody talks about the carbon budget. The remaining carbon budget, that is very limited now. If we set the target of temperature increase 1.5 degree, which is basically we are aiming to, with the given emission rate, that target, you know, the remaining carbon space that will be spent within a span of 7 years till the end of 2030. This is the estimation given by the scientists. Of course, if we are aiming to 2 degrees Celsius, you can just stretch it longer to 25 years. So this is how basically how we can distribute this carbon space in a judicious manner so that you can accommodate the need of developing and the least developed countries, because they have to develop. And developed country, this problem, the environmental problem, this is basically historically they should bear the responsibility, and rather they should basically do something, because this, when I say judiciously, it should be distributed progressively. Progressively means the least developed country and developing country, they should get the maximum. And rather, if possible, the developed countries should not target the net zero. They should target the net negative. They should vacate some carbon space so that, you know, it should be more justice to the developing countries, the least developed country who has yet to see the light of development. So this is how the relevance of this Indian presidency lies. Not only this, but other issues which are pertaining to developing and the least developed country in different areas, then definitely because India, if it raised the issues this time, and again this is deliberated for 2 years, and consensus is built up among the G20 countries, because G20 country is a very powerful forum. Though it's not a forum to make a binding commitment, but even the consensus is important, because when this consensus, because this become a guiding force, because when they will reach to the forums, the respective forum where the binding commitments are made, then definitely this guiding principle is going to help them. So this is how the relevance of this G20 presidency lies. So I think I should stop here, because I just wanted to set the ball rolling for the in-depth discussions by the respective other speakers. I just wanted to say, because this theme is women-led development, then definitely G20 also has one theme, the women-led development, and that is very important, because it has been researched and it has been found that if one woman is empowered through educations, then, you know, the whole family is empowered. And spillover effect, the externalities, which in economics we talk about the externalities, the positive externalities, the spillover effect is much more when you basically empower a woman. So this is a very important topic today. I think I should stop here. Thank you very much. Thank you so much, sir, for enlightening us with your mind-riveting and enriching brief on the relevance of G20, India's G20 presidency, and the G20 University Connect program. I now extend a warm welcome to Mrs. Preeti Saran, ma'am, our lead speaker of this event. Mrs. Preeti Saran joined the Indian Foreign Services in 1982 and superannuated as Secretary East in the Ministry of External Affairs in 2018. After serving as the ambassador in Vietnam from 2013 to 2016. Her other overseas assignments include Toronto, Geneva, Cairo, Dhaka, and Moscow. During her professional career, Ambassador Saran has worked extensively on India's bilateral and regional relations in the neighborhood, the Indo-Pacific region, the Americas,
multilateral negotiations, cultural diplomacy, and establishment work. Mrs. Saran was re-elected for a second term as a member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights from 2023 to 26. She is a member of the Governing Council and the Governing Board of the Indian Council for World Affairs. We are privileged to have you amongst us, ma'am, and I request you to take the stage to present your lecture. मंच पे और सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम. I'd like to thank you for this very kind introduction. I feel very privileged. मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आपकी दून यूनिवर्सिटी में आकर. इतना खूबसूरत आपका कैंपस. अभी आते ही मैंने देखा इतनी हरियाली, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, इमारतें वगैरह बनी हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं. तो आप स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ पर हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा. मैंने देखा आपके रेजिडेंशियल ब्लॉक्स भी बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं. मैं थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम भी मैं गई थी, वहाँ पर गेस्ट हाउस, वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में ये सब उपलब्ध है आपके लिए. सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंट हियर टुडे टू स्पीक ऑन इंडियाज़ presidency of G20, particularly when the theme is women's empowerment and their relationship to development. I feel very privileged, especially with this theme, because I'm sharing the stage with such dynamic women on the podium, and I'm sure there are equally dynamic women here in the audience as well. That makes it that much more happy occasion for me. देहरादून से मैं पहले भी वाकिफ़ हूँ. जब 40 साल पहले हमारी ट्रेनिंग चल रही थी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी इन मसूरी, तो हम लोग अक्सर देहरादून आया करते थे क्योंकि इट इज़ नोन फॉर ऑल इट्स रेस्टोरेंट्स एंड ईटिंग जॉइंट्स. सो whenever we wanted to escape a little bit from rigorous training, we would come down, enjoy, of course. And Dehradun is known for its educational institutions and organizations, including the Doon University, which is one of the top 10 rated universities of Uttarakhand. A very beautiful state. And I think all of you who belong to Uttarakhand and those who are living here now, I think should feel very proud of this beautiful state that has so much divinity around it, so much goodness. Yesterday I was at another event and मैंने वहाँ पर बताया सभा में कि दिल्ली से आके मुझे यहाँ पर उत्तराखंड में उत्तराखंड के वासियों से मिलके बहुत अच्छा लगता है. आपकी मेहमान नवाजी, आपकी नम्रता, आपकी मीठी भाषा, ये सब हमें दिल्ली में ज़्यादा उपलब्ध नहीं है. तो इसलिए जब ये आके हमें देखने को मिलता है, आप ऐसा ही रखिएगा अपने आप को और दिल्ली को भी शायद इस तरह से अपनी तरह बनाने की कोशिश करिएगा. Maybe G20 is a good occasion to do that. So talking of the fact that, I have Dr. Alka Mittal here and, of course, the Vice Chancellor, I feel very, very happy that, women is the subject that has been chosen today. And in that context, I thought I will share one of my favorite quotations. This was said by Charlotte Whitten, and she was the mayor of Ottawa, a capital city of Canada, many years back. And she said, and I will quote, "Whatever women do, they must do it twice as well as men to be thought half as good. Luckily, that is not difficult," unquote. So I can say that, really the sting is in the tail of this quotation, because I know I've been a woman in the workforce, and I know that to prove myself, I've had to work doubly hard. But I can tell you also that, wherever I have been posted overseas and all over my own country, I can say that I feel very strongly on the subject of women, development and empowerment, because the health of a society is judged by the way they treat their women. Women are an integral part of our society, and without their progress and overall progress, society will not progress. And you heard Professor Gupta just share this quotation where it said that if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family.
And that highlights once again the importance of education and women. And I think the Doon University, led by such a dynamic Vice Chancellor, the Chancellor who's the Honorable Governor of your state, who's also very committed to women empowerment, the fact that Uttarakhand is known for very dynamic women, the fact that, your Chipko movement and other related activities have been very strongly led by women is a very inspiring story. I also believe that genetically, I think women definitely perform better. That's why, they have to work doubly to be thought half as good as men. Only because they can, I think they're very good at multitasking, they're very nurturing, they're very caring, they are frugal, they are selfless. मैं अगर महिलाओं की ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ तो पुरुषों को ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी में मेरे पिताजी मेरे सबसे इंस्पायरिंग एंटिटी रहे हैं. उन्होंने मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया. आई वॉज सराउंडेड बाय मेन. मेरे 2 भाई, मेरे पति, मेरे 2 बेटे, all of them have been very strong influences. So whatever I have achieved because of the support I got from all of these men who are very important people in my life, who also, I think, gave me a lot of encouragement. So I would say that when I say about women being some ways better and be able to perform doubly well, it's no insult to men. So please मुझे माफ़ करिएगा अगर इस बात से. डिप्लोमेसी में भी मैंने देखा कि हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस में भी महिलाओं और पुरुष का जो अप्रोच होता है कोई भी समस्या को लेके थोड़ा अलग होता है. And I'm again not trying to insult men, but if you recall some of the old Greek plays, Lysistrata and others, men perhaps find solutions by maybe more confrontational approach. But I think women would find, more consensus. So if you give them a problem, they'll deal with it differently and come out with solutions quicker and better. So I think world would be a better place if we had the participation of women much more. And this is something that our Honorable Prime Minister himself has given a lot of primacy to. And I'll quote, and he has said that from financial inclusion to social security, quality healthcare to housing, education to entrepreneurship, many efforts have been made to put our Nari Shakti at the forefront of India's development journey. These efforts will continue with even greater vigor in the coming years. And some of the examples of the projects that Prime Minister himself has launched and led, I can recall, of course, the Poshan Abhiyan, which has empowered women and children from providing them nutritious food. Other notable schemes include the Ujjwala scheme, the Nirbhay scheme, the Beti Bachao, Beti Padhao scheme, the Pradhan Mantri Awas Yojana, the Sukanya Samriddhi accounts, the fact that, when the Mudra scheme started, out of $19 trillion in loans disbursed to small businesses, 70% were actually given to women. And I can tell you that those 70% women might have done a better job of those loans than the 30% men did. So I would say that India leading the G20 presidency with women-led development as a key priority area during our presidency will ensure that gender considerations are mainstreamed, of course, in our national polity and implementation, but will also be mainstreamed in G20 discussions of the leaders. And so India's focus will therefore be on the Sustainable Development Goals, which focuses also on gender equality and women empowerment. Professor Gupta has already given you a wide exposure to what G20 is all about. So what I'll do is I'll quickly just recapitulate for you some of the points as to what importance does G20 have for all of you, for India, and for us. I already mentioned and spoke in detail about women's empowerment and women-related issues, which is a very important aspect of India's presidency. But what makes this presidency of India very special and different from India's presidency of many other multilateral events? And you would recall that, about 10 years back when the NDA government came to power for the first time in 2014, for the swearing-in ceremony, our Prime Minister had invited all the Prime Ministers and Presidents, that is the heads
for his swearing-in ceremony. The second time round, in 2019, he invited all the leaders, again from the neighborhood, and what is called the grouping of BIMSTEC, the Bay of Bengal Initiative for Multilateral Economic and Technical Cooperation. Once again, pointing out the importance, one, that he attached to India's neighborhood, that, for us, if we have to grow and develop, we cannot do it alone. We have to grow with a peaceful periphery and a friendly neighborhood, and which is why the neighborhood first policy takes primacy for our country. We've had other major events that India hosted in the last 10 years. We hosted what is called the India-Africa Summit, where we invited heads of state and government from many African countries. That was a big event, but again, it remained a Delhi-centered event. In 2016, the Prime Minister had hosted the BIMSTEC, the BRICS BIMSTEC Summit, where the BRICS countries were invited, the leaders from BRICS countries. BRICS would be Brazil, Russia, India, China, and South Africa, and the BIMSTEC. Now, that was a Goa-related event. We've had some other big events like the India-ASEAN Summit in 2018, where leaders of all the 10 ASEAN countries participated in an India-ASEAN bilateral dialogue, but also participated as chief guests for the Republic Day. I'm enumerating all of these. In fact, in July this year, Prime Minister will also host the leaders of the Shanghai Cooperation Organization, where you expect China and Russia and other countries of the SCO from the Central Asian republics to participate. Now, these summits really are leader-led events where our Prime Minister interacts with presidents and prime ministers of the various organizations. What makes G20 and our presidency different is the fact that it is a year-long celebration. We assumed the presidency of G20 in December last year from Indonesia, but we've continued the celebrations and awareness creation about the importance of G20 and how it can gel with our own national development goals and priorities. So that has become very much what is called Jan Bhagidari, that all of you citizens, particularly the youth, the universities, who are the main incubators of the future thought leaders of our country, must be involved along with women, the youth, civil society, think tanks, etc. It is something that has never happened before. So that's what makes G20 and our presidentship very unique. It is, of course, a very proud moment. India, G20, as you know, comprises of these 19 countries and the European Union, 90 most influential countries. They comprise 85% of the world's GDP. They comprise of 75% of the world trade and 2/3 of the world population. Such a grouping can definitely, when the leaders of these groups come together, these countries come together, can really have a major impact on coming to consensus or a decision on important economic, financial issues, especially today, when we are recovering from COVID. We have this looming inflation, global inflation upon us with the war in Ukraine, which has resulted in fuel shortage, food shortage, which impacts, it started in Europe. It's a problem which we didn't have nothing to do with it, but it is the developing countries who are perhaps the biggest victims of the fallout of a conflict like that one. And of course, climate change, on which, of course, Professor Gupta also briefly touched upon. So really, that is what makes this G20 as a grouping a very unique one. It has a global outreach of members, the most influential players, and the number of events that have been planned to create awareness, including, I believe you had one event yesterday, and of course today's event, plus, I think all of you have also participated in other related activities. That makes this G20 a very unique presidency for India. Of course, it is a matter of great pride that our presidency of G20 comes at a time when we are also celebrating
75 years of our independence, which is the Azadi Ka Amrit Mahotsav, as we celebrate the Amrit Kal, the 25-year period beginning till we from our independence. So that is yet another aspect which makes this focus of G20 presidentship very, very important for us as we move towards a futuristic, prosperous, inclusive, and a developed society distinguished by a very human-centric approach at the core. As you might have seen from the film that was shown just now, plus a lot of media reports, more than 200 meetings are planned, I think, in 32 different cities of our country. And I think about 100 such meetings have already been undertaken. It provides us a huge opportunity to showcase to other participants of G20 countries, these most influential countries, about the richness, the diversity, our cultural heritage, our democratic values, our economic growth, our development. And I think each one of us, including Uttarakhand, including your university in Uttarakhand, becomes a very important stakeholder to this aspect of our presidency. It is also, an opportunity for us to showcase our hospitality, particularly, as I mentioned, your hospitality in Uttarakhand, the Atiti Deva Bhavo sentiments that are the core values of, our ability to take care of our guests. The other aspect that makes this unique for us and important is that there is a lot of interest in India's growth story. Today we are the largest economy in the world, fastest growing. In spite of COVID, in spite of conflict, the fact that we've been able to maintain that growth, which is important. We are also the largest population in the world today. And we have to grow at the rate, if not faster, if we have to live up to the aspirations of our people, particularly our younger generation. And here I will again quote our Honorable Prime Minister, where he said, "Today, there is an unprecedented curiosity in the world to know and understand India. Today, India is being studied in a new light. Our current successes are being assessed, and unprecedented hopes are being expressed about our future. In such an atmosphere, it is the responsibility of the citizens to go beyond these expectations and acquaint the world with India's capabilities, philosophy, social and intellectual strength." Unquote. And the theme of the G20 is Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, therefore becomes a very important aspect in the face of evolving global challenges today. I'll quickly touch upon some of the important, though I believe that yesterday you did have a session on technological growth and development, but really I was going to touch upon some of the initiatives that have been taken in our growth story, whether it's UPI, whether it's lifestyle for a pro-peoples and a pro-planet approach to sustainable development that we've been taking. Professor Gupta also mentioned about the Global South and our interest in that. In fact, we've been leaders there. We are a very strong voice for the developing countries. You saw it firsthand during the COVID period, when not only did we actually administer 2 billion made in India vaccines to our own people, but at the same time, we also were the pharmacy of the world. And on our own, we reached out and provided vaccines to other needy developing countries, mostly on grant basis, apart from other medicines and related equipment and kits. And I'm sure Dr. Gupta is here, he would know more about all that, but it is something that we can take pride in, the fact that our focus remained on fellow developing countries. The other very important and exemplary aspect of India's leadership in sustainable development has been the focus on new and renewable energy, because we are 70% dependent upon fossil fuel, coal, petrol, oil, etc. But here it is India that has taken the lead in forming what is called the International Solar Alliance. We are solar rich. We know that has very little carbon footprint, if none at all. And it has been our commitment that, notwithstanding the unfairness of the global climate change discussions, where
the largest emitters, the industrialized countries, the richer countries, are expecting us today, when we are on our growth path, to halt our growth so that the planet remains safe, when it is they who have been the biggest polluters of this planet. The UPI, the digital payment system that we all talk about today very proudly, is yet another very good example of India bridging the digital divide domestically, and India therefore can be a very important leader and somebody that they could emulate internationally as well. And it is something being looked upon with a lot of respect and expectation from India. We have, of course, a very vibrant startup ecosystem, and I believe Uttarakhand also is very focused on working on that, and perhaps some of you present here will end up being, major startup entrepreneurs, and I wish you all the best in your endeavors. But today, India is the third largest in terms of startups, ecosystem, and unicorns that have come out of these entrepreneurial capabilities of our people. I had the opportunity to discuss separately with some of the faculty the importance of India's national education policy. And I think the focus will be on skilling our youth, reskilling them, upskilling them, so that you are able to not only provide employment for yourself, but also be the generators of employment for the large population that we are. Moving on very quickly to G20's importance as part of India's presence. One is, I've already explained to you the importance of India being part of this very influential forum. But in any case, no matter which aspect of our foreign policy we focus upon, the purpose of any foreign policy for India is to really focus on what will contribute to India's growth and development. So apart from G20, India, as I mentioned earlier, is also a part of many other groupings: Commonwealth, the BRICS, the Shanghai Cooperation, the Quad, the Indo-Pacific Economic Framework, many other partnerships with ASEAN, with EU, with the Central Asian republics and others. So that makes it really a very unique aspect of our foreign policy. As the largest democracy in the world, representing 1/6 of the world's humanity, our priority is to provide decent standards of living to its very young, aspirational population that is peaceful, tolerant, inclusive, and plural. So our foreign policy initiatives are aimed at supporting these core Indian civilizational values simultaneously with its development goals and objectives, and which is why we've created a web of partnerships. I already mentioned about our neighborhood first policy, but also beyond the neighborhood is the extended neighborhood to our east and to our west. So we had what is called the Look East policy, where we accelerated and focused on our relations with the countries in ASEAN and beyond. And then in the West, our relations with the Gulf countries has never been better than before. In fact, what is unique about India's strategic autonomy in our foreign policy is that we are able to hold multiple relationships not at the cost of the other. For example, we have very good relations with Israel, but that has not been at the cost of our relations with Palestine or with the Arab world. Or our relations with the Arab world has not been at the cost of building our relations with Iran, even though Iran and Arab countries, though now there has been a bit of a improvement in their relationship. Or the fact that India has a strategic partnership with USA, but it also has a strategic partnership with Russia. For different reasons, USA is our largest trading partner, our largest technology partner, but then we have been traditionally dependent upon Russia for defense procurement. They have helped us in times of trouble. They have supported us at the Security Council. What is important to remember about India's dealings in our external relations is the fact that when we deal with differing partners, we are very honest in our relationship. And I think that is where they appreciate India's value for what we bring to the table. I think Honorable Vice Chancellor has already mentioned about the fact that, we're not a conflicting people and we tend to resolve things peacefully. And that remains our core value also in our foreign policy. And
in fact, even in the ongoing conflict in Ukraine, we have said that this is not the age for war. This is really, you have to go back to the negotiating table. And that will remain our focus, even in our discussions during the G20, although the G20 should primarily be focused on economic issues and not political issues. Another very important aspect of our foreign policy, and I'll quickly conclude, is the fact that, we have, apart from Vasudhaiva Kutumbakam, or related to that, is a policy of Sagar, really related to oceans, because we are the leading power in the Indian Ocean. But Sagar means the security and growth for all in the region. And in that context, India has been the first responder to any natural disasters or earthquakes, etc., that have taken place in our neighborhood since the tsunami of 2004. Uttarakhand would appreciate it better because you yourself are prone to many natural disasters, and I believe that's what makes you that much more spiritually elated people than maybe the rest of our country. But certainly India has been in the lead in helping Maldives and Nepal and Sri Lanka when they've been hit by natural disasters. And that remains a core importance to our foreign policy. I have to just quickly conclude by saying that, as a diplomat, when I was a serving diplomat from the Indian Foreign Service, I took a great deal of pride in representing my country. I was fortunate that I could do it. And the pride came from my heart because of the fact that I represented our beautiful, plural, civilizational heritage, what we represent as peace, Vasudhaiva Kutumbakam, etc. So that made me very proud representing my country. I presume some of you might be wanting to write the civil service examinations, and I hope some of you will also make it to the Foreign Service or any other service in the service of the nation. For Government of India is one aspect. But even if you become an entrepreneur, you join the army, you do whatever, I think you will still be contributing to the service of the nation. And that is what I would conclude by saying, that I'd like to wish you all the best in your future endeavors, that no matter what you do, in the end, be good citizens of this country, so that in your way, you contribute to the betterment of our country, which has a very bright future because of people like you. Thank you, and namaste. Thank you for sharing such augmentative and profound views and thoughts, ma'am. You're truly an inspiration for all of us, and it's an absolute honor having you with us today. I now extend a warm welcome to Dr. Alka Mittal. Dr. Mittal is the former chairperson and managing director ONGC. In January 2022, she took over the additional charge of CMD and became the first ever woman chairman and managing director of ONGC. As the head of skill development at ONGC, she made a scheme named the National Apprenticeship Promotion Scheme that has led to the training of 5,000 apprentices at different centers in 2009. With a number of awards to her credit, ma'am is the recipient of the Sustainable HR Leadership Award in the 28th World HRD Conference 2020 in Mumbai for her contribution in the field of HR and many more. We are privileged to have you amongst us, ma'am, and I request you to take the stage to present your lecture. A very good afternoon to all who are present here. I am so thrilled to be present today at the Doon University, which is in the Devbhumi. Incidentally, this Devbhumi is my Janmbhumi too. So this visit to Dehradun has special meaning for me. Every time I come here, I visit this part of the country, I feel I get connected to the roots, to my roots. And that's why seeing all the youngsters here and the very accomplished professionals on the dais, be it the gurus who are here in this temple of learning, Professor Surekha Dangwal, the other gurus who are present on the dais, off the dais. In fact, our ma'am Saran has in her very profound talk, as we were talking, has shared with us the international perspective and the governmental perspective of the G20 and
otherwise also how, where we stand as a country, as a nation, and what could be the future be for us. Dr. Gupta, again, his presence is something which is going to be adding so much relevance to the event which we are part of participating in today as part of the G20 dialogue and connect with the universities. Dr. Anshuman and Niyati are associated very actively with this whole process, and their presence here is, again, Dr. Anshuman told us so much about how the G20 process has started and how we are actually taking it forward as a country, as a group of people, as part of the G20 and under the presidency of India. So it's a very unique movement and an event. And what I feel here today, by my presence here today, I would like to first begin with saying that the future for us is about how what are the trends which are shaping the future of our globe, and what is at the top there is, of course, globalization. We have talked about Vasudev Kutumbakam, how we are all together in where we take what stand we take to take us towards a brighter, better future. Demographic shifts, we have read about the UNFP report, how demographic dividend is going to be very crucial if we are able to make the most of this opportunity which has come our way. The explosion of data, of course, and emerging technologies, be it digital or other technologies, are again going to shape the future which we are heading towards. And while we are talking about technology, we know that with the technological advance and the going digital so fast, so rapidly forward, we know that the job roles are getting redefined. Our whole education system is getting redefined. And there is more and more complexity getting added to the very way we deal with situations, we deal with the issues that we are confronted with. So technology, while it is a major disruptor, is also a source of tremendous hope for all of us, and especially for the youth who are present here right in front of us. Before I begin this talk of mine, I would like to share something I was reading this morning about a very innovative technological initiative taken in Ladakh. And in the rough terrain there, in the mountain shadow area, a leafy Li-Fi, just like we talk about Wi-Fi, Li-Fi, they have developed a Li-Fi for connecting the far-flung villages which are in mountain shadow areas. Sonam Wangchuk, the very well-known out-of-the-box thinker, and who's heading the Himalayan Institute of Alternative Technologies in collaboration with the Navtech from Gujarat, has taken up this initiative where they have developed this solution to the problem of lack of connectivity in the mountain shadow areas. Li-Fi is a wireless network technology using LEDs to transmit 5G signal to villages in shadow region of a mountain. The mountain acts as a tower to receive signals from a geotar boosted with a laser, and it transmits this to hitherto inaccessible population. So mountain, which was seen as a hurdle or as an obstruction in the way of connecting, is now seen as an asset. So you see, possibilities are unlimited, and potential within us to innovate and create is required to be tapped. So we ourselves are part of the solution when we look at the problem. So let us look within and around us, and I am sure we'll be able to find so many solutions. That's why, it has rightly been said that while the fourth industrial revolution is going to be about emerging technologies, about advancements led by going digital,
it is also going to be about tapping human expertise, about you making the most of the human potential that we have. And for that, we have to tap the entire population, all the resources that are available to us. We can't just leave out 50% or a great chunk of the population from getting into active economic activities. I mean to say the women, just because they are not getting included in our plan of actions. Last 10 years, we have seen lots of changes emerging in this area as well. In fact, I take pride. I have been with a PSU for a lifetime, and I take pride in saying that when I joined, I still remember when I came to a slightly leadership role in 2013, we had just 2 women leaders in PSUs. And today, we have 10 women leaders who are either in chairman in the C-suite, they are the chairing a company, or they are in the board of directors. This is besides the independent directors that we have. So whether it is because of the Companies Act and the mandatory need to have women, or because women have got opportunities to come forward and they have taken those, made the most of those opportunities. So this is required to be kept in mind when we are talking about empowering women and youth. So I'll be trying to include both. I am not going to limit to talking about women. So India is a country, we all know that we have 50% of our population which is below the age of 25. And we also know that while we have these wonderful youngsters who are actually moving forward with all their hope and all their efforts towards a bright future for themselves, we also see that we are falling short in terms of competent talent and know-how. In the 8th edition of the Indian Skills Report, which was published recently, it reveals that less than half of the Indian graduates are actually ready for employment. So standing in this university, I'm going to talk about what all efforts we can do to make sure that those who are stepping out of the this wonderful premises, are ready for employment. But the effort will have to be made by both. Like we say, ek haath se tali nahi bajti. So effort will have to, while all effort will be made by the faculty, the wonderful gurus you have, efforts will also have to be made by the youth, the youngsters who are present. So I was reading an article which was there in the Pioneer, which was written by Professor Mamgain, who has talked about how in Uttarakhand, the youth who are in the hills, who are in the upper hills, are not getting enough opportunities who are for employment. And that's why out-migration is a major challenge which we are facing, because opportunities are not as many as required. So this is something which we all need to keep at the back of our mind when we talk about how we are able to empower the youth and the women, including the women, of course. So in this background, I have divided my talk in 5 parts. I'm not touching on the international perspective because I don't think in any way I can give you a better perspective than what Ma'am Saran has given, Ma'am Preeti Saran has shared with all of us. In fact, it has educated me about so many of the fundamentals. And Dr. Anshuman also talked about SDGs. I'll just add the UN Global Compact principles, which were declared at the turn of the century by Mr. Ban Ki-moon, have put all the corporate on the track, what all we can do to make a difference
towards, by way of accepting and owning our responsibility for creating a more responsible corporate world. So while we have talked about it, I'll talk about the other 5 parts. The government, of course, Ma'am Preeti has also touched upon a lot how the government has taken every challenge head on, and how we have made rapid advances during the last few years. Infrastructure, electricity, just look at the roads. Just look at Uttarakhand. I remember 2 years back, before the pandemic, I was in Dhanolti, and I was standing outside. I could see lots of clusters of light around me. I had been there earlier, 7-8 years back, and it was all dark. So I asked one of the persons present there, I asked him that, is this area getting populated now? He said, no, there were people living there, but they did not have electricity. So this is what we have been able to see, the change in Uttarakhand which has happened. Roads. My driver, who's at Delhi, he's from Uttarakhand. Again, a case of out-migration along with his entire family. He says, when I go to meet my mother, I am able to reach my house, the closest possible to my house, just 50 meters away from there. Earlier, I had to park my vehicle 2 kilometers away and then climb up the hill. So this is the kind of progress. We see the major highways that are coming up in connecting metros, but the other parts of the countries are also getting connected. So like I have been a student of economics. So we have talked about balanced regional development and economic development. We are seeing that the impact of balanced regional development is spreading, and that is something which is very, very remarkable. So while we talk about the government and how the policies, especially, government by way of providing not only the infrastructure, the kind of framework that is required, the policies which are required, having one special economic zone, like I think Rudrapur came here, created so many employment opportunities, so created so much hope in a particular area. And this is happening across the nation. And while all this is happening, we are also knowing that now, even in the international scenario, organizations, institutions, and corporates are seeing the ease of doing business in the environment that is being created in this country. Definitely a lot more can be done, but a lot is happening, and this gives us hope for a very bright future in the times to come. So I'll come straight to the corporate world now, the second part. The corporate world, while as a corporate, as ONGC or any other company, whether it's a private sector or a public sector, our main responsibility is to meet the vision with which we have been created. Like ONGC is trying to do better and better on the energy front, and we are trying to become a diversified energy company, because we don't want to remain dependent on fossil fuels. We are already rolling out a project on offshore wind developing offshore wind technology and wind farm in the Mumbai offshore area. So idea is that more and more we are able to contribute towards the nation's growth. So that with that in mind, companies are engaging, employing a good chunk of ready to employ workforce. And not only that, they are also providing opportunities to youth to intern, to do their apprenticeship at their places, so that they become ready to get employed. So that is another effort that is made. At the present moment, ONGC would be engaging directly and through contractual workforce about 60,000 employees. And in addition to that, what we are also doing is through our CSR initiatives, we are reaching places where others are not able to reach, because by way of our activities we are required to go for exploration and production of oil and gas in the remotest corners of the country.
And not only that, whether it is the state of Assam or it is Karaikal in Tamil Nadu, we are present almost every part of the country. Gujarat, of course, is an advanced state, but there also we are doing lots of contribution towards skilling. Our Skill Development Institute at Ahmedabad each year creates a pool of 780 employable youth who are skilled to take on technical roles in different companies, and they almost 80 to 89% of them get employed immediately as they pass out. So these are some of the efforts. In a state like Jammu and Kashmir, where we were not present, we partnered with the Army, Indian Army, and we have been able to create take up a skilling initiative in Baramulla, where we have been able to provide for skills in different domains which are required. And some of the youngsters who passed out from the hospitality and tourism through the certificate course over in Jammu Kashmir have got placed in Delhi at the Taj Hotel. So this is the kind of effort when we all put our hands together and make efforts to support and back the government initiatives, we will definitely be able to do a lot. And that is what the effort has been. I'll now come to the Doon University, the faculty who are here, the gurus who are here. There's a lot that you have been doing. There's a lot of, like the kind of campus which is created over here is so reassuring for us, you know, to see that we have one of the best facility here provided to the youth who are coming from different parts of the state and maybe from different parts of the country too, to study over here. So what I would like to share with the eminent gurus, you yourself are teaching them the best, and I know you're putting your heart and soul in this. I will only say from experience as a student that what made the most impact on me, and when I look back 40 years, I see that what impacted me the most was the way my professors, those professors or teachers who could engage me. Because I was reading somewhere, you know, you tell someone something, he or she may remember. You teach someone something, that person may try to understand. You show them how it is done. They will surely be able to have a good grip over it, but you make them do something along with you, and they will definitely come out richer and more enriched by the experience. So I still remember, I did my post-graduation from Dehradun, and there was one Professor Johri who used to teach me, who was heading the economics department, who used to teach us macroeconomics. And he's the one who used to, you know, have eye contact with all the students. And at times, you know, when he would ask a question, I, as a timid, shy girl, would not try to stand up or raise my hand. He would look at us and then he would say, "Aap kuch kehna chahengi, Alka?" And that was it, you know, that confidence he reposed on me gave me so much confidence to stand up and talk. At times I would be right, sometimes I may not be right also. But this is it. The connect with the students which you are able to establish is going to take the students so far, and they will always come back to you to thank you for the kind of effort you have made. Professor Johri is no more. He passed away when I was passing out of the college, but the impact he had on me and the other professors who were teaching me was something which makes me feel that I am here today because of that effort. And I would also like to share that while we are talking about Youth Connect, students, I will talk to the students who are present here. You know, what you are learning over here, what you are doing, absorbing in your classrooms gives you good amount of knowledge to understand how to
to figure out what is your particular area of expertise going to be. There'll be lots of questions that will be there in your mind. Please don't hesitate, ask the questions, engage with your teachers, with your professors, and engage with all the professionals whom you come in contact with in your journey of getting educated at this university. But I would also like to share, try to develop some of the soft skills. I started talking on a public platform 15 years after I passed out of college, because I was very hesitant, trying to be in my own, shell. So I suggest step out of your all the barriers that you have created around you, in case you have. The young youth today are not like I was when I was young, but try to develop those skills which are required, which will be seen, because of these skills, you will be seen as more employable, more dynamic, more having a better potential to shine in any role that is assigned to you. So while I would say that there's a lot that is in store for all of you, there are lots of opportunities that are going to be coming your way in the coming times. It is for you to take on those challenges, those opportunities, and to hone your skills and bring in the best in yourselves. Because it is not about knowledge, it is about knowledge, skills, and attitude. The attitude you have is what is going to take you forward to any level you can dream of or imagine. So while we have talked about this, I know that 60% of the students here comprise of girls. So I will not want to leave out addressing them directly on this. And I would also like to say that we have always felt that there are social, cultural, and economic barriers to the women, more and more women coming to the workforce. And I'll touch on the social and cultural barriers. Every time, when we talk about employment of women, I have heard in some of the cases when I was studying, the girls would say, "Ghar se permission leni padegi." They will have to take permission to think of getting employed. Something like this is like limiting yourselves. Have a dialogue. Try to communicate to your family, your friends, that you would like to grow as a professional as well. So that is one thing. Secondly, when I was doing my post-graduation, again, thanks to Professor Johari, I did a study on educated unemployment amongst girls in Dehradun district. He was the one who suggested that this could be one area of interest. I am talking about 1982. I went door to door in some areas, some parts of the city. And every time I approached a family with the girl, her mother or her elder brother or a sister would come out. And they would say, "No, we want her to get educated. But why should she look for employment? She is good enough. She can continue to be a housewife and perform." I won't say that being a housewife is anything negative, but just look at the opportunity. As a student of economics, whenever I am looking at something, I look at the opportunity cost. A girl sitting at home, maybe contributing a lot to the house, but she can contribute a lot to whatever profession she chooses. So I will just share, because I want to actually connect with the girls who are present, maybe a little far, but I can see the kind of drive, the initiative which is there in the girls here. I would say that why should you all limit yourselves? And at times I have seen amongst the girls, they have this feeling that if they take on a job, the family will get neglected. And in that context, I was reading a Harvard article in one of the HBS,
And what I read there was that in a survey which was undertaken across 24 countries in the world, of men and women, it was seen that children of work, and these were children of working women, the children felt that they were better equipped to take on challenges in life when they saw their mother going out to work and manage her work and personal life responsibilities in a very balanced manner. So this is all in the mind that if we go out to work, it will impact the family life. No, not at all. Only thing that we need to do is create teams. One at workplace where we get all the support to continue rising as a professional. Second at home, where the entire home team is there to support each other and including us to make sure that we are able to balance it. And that is what I feel is the beauty of being a part of a collaborative effort. And that is what is required to be done for us, because for the future of our nation, we can't leave these 50% of our population, maybe out of that about 18-20% are already engaged. We can't leave out this huge potential untapped. And this is what I would like to share. But coming to the economics of it, I was reading somewhere that gender equality is as much a topic of economics as of social equity and organizational structure. Having more women in decision-making positions generates stronger market returns and superior profits to the tune of 26% higher, which is tremendous potential for all the organizations to untap and all the stakeholders to untap, I would say. And while we are talking about the economics of it and how the equity is required to be there, we also need to, I would like to mention that being in, if one woman comes to a leadership role, and in a decision-making role, there's so much change that happens. I have seen it in so many cases, but I'll be able to quote from my own example. I came to the board of, I was the first lady to come to the board of ONGC in 2018 November. Today, ONGC, while I was superannuated as CMD ONGC, today ONGC has a director of finance and director exploration who are women. And there are many more who are ready to take on any challenging assignments. And their eyes are right at the top. So having a woman at the top or in a lead role is something which is the best way to ensure that more and more women come forward to take on challenges and to make the most of the opportunities coming their way. So I would just like to say that gender equality, in light of all that we have discussed and all that has been discussed, gender equality is something which is non-negotiable. We have to have it, otherwise we are going to, India as a nation may lose out on the demographic dividend we have so proudly talked about. And I would like to just close this. I can go on talking about how women can do better, how they can come forward, all those things. But I'll end with a message to all who are present, irrespective of gender. There's a quote by Bill Taylor in a Harvard Business Review article in which he says, "The true mark of a leader is the willingness to stick with a bold course of action. They understand that in an era of hyper-competition and non-stop disruption, the only way to stand out from the crowd is to stand for something special." So this is my message to all of you, the young leaders who are present in front of us. They are the future. You are the future of our nation. Stand out for something which people remember you by. And that is what is going to take us as a nation forward. So best wishes, and thank you for having me over. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your enriching words. It's an absolute privilege having you amongst us today. Thank you, Naita.
and now health, which is one of the main objectives of G20, specifically digital health. I, on behalf of Doon University fraternity, welcome renowned TEDx speaker and intervention cardiologist, Dr. Mohit Dayal Gupta. Sir, he was born in 1974 in Delhi. Dr. Mohit Dayal Gupta is a cardiologist by profession and currently working as a professor in GV Pant Hospital. He is also cardiologist in Parliament Health Annex for honorable members of Parliament. Dr. Gupta completed his education from University College of Medical Science in New Delhi and then post-graduation and further speciality at Maulana Azad Medical College. And he is the best example of local to global, the statement of PM Modi, because he is contributing in the national health grid of India as well as with the help of his research, having more than 150 research papers, he is contributing in the global health network. Dr. Mohit Gupta has been nominated as Fellow of American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, the Cardiological Society of India, and Fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. Dr. Gupta is the principal investigator of many landmark research trials being conducted globally in the field of cardiology, investigating the role of genes in causing hypertension, heart attacks in young population, which is very evident, of course, the impact of COVID-19 on health. Dr. Gupta is using artificial intelligence in conducting his research. He has more than 150 research papers, which I said recently. Dr. Gupta has received a number of national and state level awards, including the prestigious National Best Innovation Award in Cardiology, and then Eminent Teacher Award by Delhi Medical Association in 2022, Excellence in Cardiology Award in 2018, Bishop Sarup Young Scientist of the Year Award in 2019, KL Wing Oration, there's a long list actually, and then of Year in 2010. He was the brain behind the famous preventive cardiology app Dhadkan, the lifeline that was designed for employment of IOCL. Dr. Gupta was recently invited by TEDx to speak on creating a conscious future. He is a renowned motivational speaker with numerous symposia and sessions to his credit in institutions like IIT, Oxford, Cambridge, and many more, in the top ranking in the world. He perfectly blends ancient wisdom with contemporary thinking and amalgamates science and spirituality in his sessions. He has been associated with Brahma Kumari's World Spiritual University from his childhood and practices Raja Yoga Meditation Delhi. A very warm welcome, sir, on behalf of Doon University. Thank you. Thank you so much. May I have the voice? Yeah. Am I audible? Yes? Okay. Thank you so much for such a beautiful introduction. दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। दोस्तों, G20, अगर मैं इसके डीप मीनिंग में जाऊं तो मुझे एक बहुत सुंदर कहावत ध्यान में आती है कि समय और समझ का जीवन में बहुत संबंध है। अक्सर मानव को जब समय मिलता है तो उसको समझ में नहीं आता है, और जब तक उसे समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। और भाग्यशाली वो लोग होते हैं दोस्तों जिनको समय और समझ इकट्ठे आ जाता है। तो ये एक वर्ष जो भारतवर्ष को G20 की प्रेसिडेंटशिप मिला है, मुझे लगता है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, जो हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस उसको ब्लेंड करके हम वेस्ट को इसके बारे में एजुकेट करें, व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, व्हाट अवर वैल्यूज आर ऑल अबाउट, व्हाट अवर कल्चर इज ऑल अबाउट, व्हाट अवर मेडिटेटिव एंड योगिक पावर्स इज ऑल अबाउट। क्योंकि भारत जितनी प्राचीन संस्कृति दोस्तों किसी भी देश की, इतना इतिहास किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का नहीं है। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले मैं IIM लखनऊ जा रहा था एक सेशन लेने के लिए, तो प्लेन में मुझे एक व्यक्ति मिले, विद्वान थे, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उन्होंने कहा, डॉक्टर मोहित, आप मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी रीइनकार्नेट इन आवर लाइफ। ये
वर्ड जब उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे एक बहुत सुंदर कहानी ध्यान में आई, एंड आई गेव अ वेरी स्पॉन्टेनियस आंसर टू हिम आफ्टर 30 सेकेंड्स। लेकिन दोस्तों वो कहानी सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आज हमारे इस परिप्रेक्ष्य में, इस समय पर बहुत रेलेवेंट है। एक बारी की बात है कि एक कुम्हार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई और उसको डेकोरेट किया, और डेकोरेट करके उसने रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने उस चिलम को तोड़ दिया और बैठ गया। तो मिट्टी ने उससे पूछा कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, तूने इसको तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने उससे बोला कि भाई मेरा मन बदल गया है, मैं अब चिलम नहीं बनाऊंगा, मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने मुस्कुराते हुए उससे बोला कि कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। उसने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? तो मिट्टी ने बोला कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतलता दूंगी। दोस्तों, हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें उत्तर दिया कि एवरी टाइम आई थिंक न्यू आई री इनकारनेट इन माई लाइफ। दोस्तों, जब भी हम एक नई सोच के साथ, अपनी एक नई विचारधारा के साथ दोस्तों जब समाज में आते हैं, तो वो सोच, वो नई विचारधारा हमारे विचार बदलने के कारण हमारी दृष्टि को बदलती है। हमारी दृष्टि परिवर्तन होने के कारण हमारी कृति बदलती है, हमारी संस्कृति बदलती है, और दोस्तों जब हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है तो हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। It all starts with only a single thought in our mind. So life is a consequence of our thoughts. दोस्तों, आज इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें नहीं बताने वाला, आपको कुछ डेटा भी नहीं बताने वाला, लेकिन आप सब, G20 केवल एक दो व्यक्ति या केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है दोस्तों, आप सब इस मुल्क की, इस संसार की, इस देश की भुजाएं हो। आप सबके अंदर अद्भुत शक्ति है दोस्तों, आप अद्भुत शक्तियों के स्वामी हो, और आज मैं आपके सामने आया हूं उन शक्तियों को जागृत करने के लिए। आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके बोल, आपके कर्म दोस्तों ना केवल आपके जीवन को रोशन करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति जो आपके समाज में आपके सामने आएगा, इस विश्व में कोने कोने में जहां आप जाएंगे, उनके जीवन को भी एक नया आयाम, एक नई सोच दोस्तों प्रदान करेंगे। आज मैं अपनी ही जीवन की 4 कहानियां आपको दोस्तों सुनाऊंगा। ये 4 कहानियां जिन्होंने मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल डाला। They gave me a new lease of life. They gave me a totally new perspective दोस्तों। और इन 4 कहानियों से आज मैं आपके सामने केवल 7 मैसेजेस रखूंगा। अगर इन 7 मैसेजेस को हमने अपने जीवन में लिया दोस्तों, you will see what our life, what this country is all about, the magic that you can create, the beauty that each one of you can create in your life। आज आप उसका दोस्तों अपने जीवन में अनुभव करेंगे। So this is going to be one of the most revealing journeys of your life। दोस्तों, मेरी पहली कहानी आरंभ होती है 20 मार्च 2003। शाम को 5:30 बजे मैं ऑपरेशन करके घर पर आया था 48 घंटे बाद। अजीब सी थकान हो रही थी, बॉडी बहुत थकी हुई थी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, और मदर ने मुझे बोला कि आप भोजन लेंगे? मैंने कहा नहीं। 7:30 बजे उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम दी, और मैंने उस कप को अपने हाथ में केवल 10 सेकंड के लिए लिया था, वो मेरे हाथ से गिर गया और मैं अपने घर की जमीन पर दोस्तों कोलैप्स कर गया। मेरे को मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, सिस्टर, उन्होंने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल में लेकर गए। मेरे अपने हॉस्पिटल में रात भर फाइट करके मुझे रिससिटेट किया गया, और अल्टीमेटली जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन के स्कैन्स में एक लार्ज मास मेरे ब्रेन में था, एक बड़ा मास मेरे ब्रेन के अंदर था। फॉर अ यंग कार्डियोलॉजिस्ट, जिसने जब चाहा, जो चाहा, जैसे चाहा, जितना चाहा, जिस प्रकार से चाहा, जिस चीज पर हाथ रखा, वो चीज स्वतः ही दोस्तों मिल जाती थी। दिस वॉज लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अल्टीमेटली इस मास के अंदर 19 ड्रग जो उस समय अवेलेबल थे, उनमें से 18 ड्रग्स के लिए मैं रेजिस्टेंट था दोस्तों। रोज 16 टैबलेट्स खाता था, 8 टैबलेट मॉर्निंग के अंदर, 8 टैबलेट्स इवनिंग के अंदर। एक इंजेक्शन जिससे मैं सेंसिटिव था, मुझे रोज हिप्स पर लगता था। अल्टीमेटली जब वो डिस्ट्रॉय हो गया, छल नहीं हो गया, तो रोज एनेस्थेटिस्ट आके हाथ पर इंजेक्शन लगाता था। दर्द होता था दोस्तों, लेकिन दुख की महसूसता मैंने कभी भी नहीं की। और उस समय जब मैं अपने हॉस्पिटल में था, मैं एक गहरी सोच में चला गया। मुझे पता लगा कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग इन माई लाइफ।
आज इस भौतिकता की रेस के अंदर ऐसा क्या हुआ कि मेरी लाइफ इज जस्ट लाइक एन एंड इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे रियलाइज किया दोस्तों कि आई हैव मेड माई सेल्फ इन टू अ प्रोग्राम्ड डिवाइसेस। आज किसी भी व्यक्ति से हम बात करें, हर व्यक्ति के जीवन में यही रहता है कि टाइम नहीं है जल्दी करो, समय नहीं है जल्दी करो। हम सब भाग रहे हैं दोस्तों। ऐसा लगता है सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक दोस्तों लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, एक अनोखी जल्दी में है। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि वी आर नॉट प्रोग्राम डिवाइसेस बट वी आर पीपल, ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन डूइंग्स नहीं है दोस्तों, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड अवरसेल्फ कंटिन्यूअसली फ्रॉम बीइंग टू डूइंग। करना है, भागना है, दौड़ना है, पूरे दिन करते जाना है दोस्तों। मुझे यह भी रियलाइज हुआ कि डॉक्टर मोहित कहीं ना कहीं इस कार्यशैली में करते हुए आपने अपने जीवन में संयम खो दिया है। आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो बैलेंस को खो दिया है। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस बैलेंस को दोस्तों रिगेन करना पड़ेगा, अपनी इस भौतिकता की रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो लाइफ मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स कर ली है दोस्तों, इसको सिंपल रखना पड़ेगा। हमारी लाइफ बहुत सिंपल है। अंशुमन जी भी साथ में बैठा हुआ था, बता रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारी लाइफ के अंदर रिलेशंस, हमारी लाइफ के अंदर सिंप्लिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, द मैसेज ऑफ लाइफ, द ट्रू मैसेज ऑफ लाइफ। दोस्तों मुझे उस दिन ये भी रियलाइज हुआ कि इस भौतिकता की रेस में आई हैव लेट गो ऑफ माई हैप्पीनेस। अपनी खुशी को ही मैंने दांव पे रख दिया है। आज दोस्तों अगर हम G20 की बात करते हैं, भारतवर्ष ये महान देश जिसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है दोस्तों, इसकी संस्कृति हमें सबसे पहले हमारे जीवन में खुश रहना सिखाती है। परिवारों के अंदर प्यार, परिवारों के अंदर अपनापन, परिवारों के अंदर, समाज के अंदर एक दूसरे को खुशी बांटना सिखाती है। और जिस खुशी का जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी अपनी पहचान है दोस्तों, आज उसी खुशी को कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके हैं, उसको हम लोग दांव पर रख चुके हैं। चलिए आज आप सबको मैं अपने साथ एक सिंपल सी एक्सरसाइज कराता हूं, और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया, मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके सामने आपके अपने जीवन की कहानी, एक रिफ्लेक्शन, एक सामने स्पष्ट आईने की तरह दोस्तों आ जाएगी। तैयार है सभी लोग मेरे दोस्त? यस और नो? जोर से बताइए, यस और नो? एवरीबडी विल डू दिस, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट इन दिस ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न है, वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? मैं आपको 3 उत्तर दूंगा। इन 3 उत्तरों में से आपको एक को चुनना होगा दोस्तों। आप बदल भी सकते हैं, और यदि कोई चौथा उत्तर है तो आप मुझे बता सकते हैं। पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। अपना उत्तर सोचिए और मुझे बताइए कि हम में से कौन कौन यहां पर पैसे के लिए काम करते हैं। हाथ उठाइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8-10 लोग, विच इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम में से कौन कौन खुशी के लिए काम करते हैं, वो हाथ उठाइए दोस्तों, पूरा हाथ उठाइए ऊपर। राउंड अबाउट 15 पीपल। इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हम में से कौन कौन पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं दोस्तों, हाथ उठाइए। सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, एवरीबडी सेज यस वी वर्क इन दिस। अब सुनिए मेरी बात को, सुनिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, और वो प्रश्न आपकी जिंदगी को आपके सामने स्पष्ट आईने की तरह रख देगा दोस्तों। आई सेड कि मैं आपको 3 उत्तर दूंगा, चौथा है तो आप मुझे बताइएगा। मुझे बताइए, जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए दोस्तों। दैट्स द प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी में खुशी को चेज कर रहे हैं, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। जब सवेरे से शाम मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज किया कि आई वॉज चेजिंग हैप्पीनेस, कि मैं ये कर लूंगा तो मैं खुश होऊंगा दोस्तों, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। टुडे भारतवर्ष की संस्कृति हमको सिखाती है दैट वी हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ दोस्तों। हर पल, हर कार्य को करते हुए, हर चीज को करते हुए जब हम खुशी को क्रिएट करते हैं तो हमारी लाइफ वंडरफुल हो जाती है। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज अलोंग द जर्नी। एवरी मोमेंट वी हैव टू क्रिएट दिस हैप्पीनेस, एंड दैट इज वेयर माय जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। पहला संकल्प जो मैंने अपने जीवन में किया, जो वायरस से भी ज्यादा वायरल आज हमारी लाइफ में हो चुका है दोस्तों, वो 2 शब्द हैं, और वो 2 शब्द हैं
आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है, सब कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए दोस्तों। और साइंस ये कहती है कि जो व्यक्ति अपने आप को टाइम से बांध देता है उसकी परफॉर्मेंस 50% डिक्रीज हो जाती है और स्ट्रेस ऑलमोस्ट 100 टाइम्स दोस्तों बढ़ जाता है। जब मेरी ब्रेन की इलनेस हुई, सबसे पहला संकल्प मैंने अपनी लाइफ से वर्ड को डिलीट किया, वो है बिजी शब्द दोस्तों। इस बिजी शब्द को परमानेंटली डिलीट कर दिया और इस वर्ड को मैंने रिप्लेस किया एक और सुंदर शब्द से कि मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं दोस्तों। इस बिजी शब्द में ही एक और बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है, वो है बी इजी। मेरी दिनचर्या टिपिकली दोस्तों 3:15 साढ़े 3 बजे सवेरे आरंभ होती है योग और मेडिटेशन के साथ, और रात को 11 बजे समाप्त होती है। ऑपरेशंस करने हैं, पार्लियामेंट है, सब जगह जाना है, कहीं पर भी। लेकिन पिछले 22 साल में मैंने अपने आप को कभी भी स्वीकार ही नहीं किया, माना भी नहीं कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूं। क्योंकि दोस्तों जब मेरा संकल्प, मेरी सोच इजी है, तो बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, उनके ऊपर मैं सहज रूप से विजय प्राप्त कर सकता हूं। आई कैन क्रिएट मैजिक इन आवर लाइफ। The beauty of life is all about remaining easy in your own life. It's all about mindset. दोस्तों आज ध्यान रखिएगा कि if you don't change anything, nothing is going to change in our life. अगर आज हम यहां पर केवल सुनकर चले जाएंगे, G20 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप लोग बहुत सुनेंगे और ऐसी भी चीजें होंगी, लेकिन दोस्तों आज ये सुनने का दिवस नहीं है। आज इस प्रोग्राम को हम इस इंस्टीट्यूट के लिए और स्वयं के लिए परिवर्तन का दिवस मनाएंगे दोस्तों। वी हैव टू क्रिएट एंड इग्नाइट द चेंज इन आवर लाइफ। अगर इस चेंज को हमने इग्नाइट किया दोस्तों, तो आज इस प्रोग्राम का यथार्थ सिद्ध जो इसका अर्थ है, जो इसका भावार्थ है, जो इसके पीछे मूल कारण है दोस्तों, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेरा पहला मैसेज जो आज मैं आपको देना चाहता हूं, वो पहला मैसेज है which I realized is life is not a journey, life is a journey, it's not a destination, and happiness is along the journey. दोस्तों सवेरे से लेकर शाम तक भागना है, एक्सीलेटर दबाना है दोस्तों, अपनी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी लाइए। रोज कार्य करना है, लेकिन हर कार्य को करते हुए आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एक दिन में 1440 मिनट हमको मिलते हैं और उन 1440 मिनट में से केवल 20 मिनट अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करते हुए दूसरों का ख्याल रखने के लिए दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खाली बर्तन से कुछ भी नहीं डाल सकते। इसलिए if you want to ignite and empower the world outside, you have to first create that energy inside your mind. आपके पास 50,000 संकल्प एक दिन में दोस्तों जनरेट होते हैं। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, नेशनल साइंस फाउंडेशन ये कहती है, अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ 50,000 थॉट्स दैट वी जनरेट एवरी डे दोस्तों, हमारे 95% थॉट्स वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। ओनली 5% ऑफ आवर थॉट्स आर पॉजिटिव एंड पावरफुल। इमेजिन करिए, जब हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, और अगर हमारी इनर फैक्ट्री से 90% ऑफ आवर थॉट्स आर नेगेटिव एंड वेस्ट, सोच रहा है मनुष्य, कल्पना कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है दोस्तों, वेस्ट सोच रहा है, तो हमारे जीवन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हम केवल अच्छी पॉलिसीज, अच्छी बातें किताबों पर और पेपर पर रख के रह जाएंगे दोस्तों, लेकिन जीवन का नव निर्माण करने में हम लोग असमर्थ होंगे। इसलिए श्रेष्ठ समाज का, विश्व का निर्माण श्रेष्ठ समाज से होता है, और श्रेष्ठ देश से होता है, और श्रेष्ठ समाज का निर्माण श्रेष्ठ व्यक्तित्व से होता है, स्वयं से होता है। उस समाज की एक इकाई परिवार, और उस परिवार की एक मुख्य सदस्य आप लोग हैं दोस्तों। जब आप परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा दोस्तों। दूसरों के परिवर्तन पर नहीं, स्वयं को शक्तिशाली बनाना यह बहुत 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 आवश्यक है। आज दूसरा मैसेज मैं आप सबको दोस्तों जो देना चाहूंगा, वो बहुत सुंदर मैसेज है। देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एंड हेल्दी लाइफ। ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एंड हेल्दी लाइफ। मेरी जीवन की दूसरी कहानी दोस्तों, 2018 का ये दिन सैटरडे शाम को मैं ऑपरेट कर रहा था, 9:30 बजे समाप्त हो चुका था दिन, हम घर जाने की तैयारी में थे, ध्यान से सुनिएगा। और सडनली मेरे ऑपरेशन थिएटर में एक 21 साल के नवयुवक को, जो डेड बॉडी की तरह था, पल्सलेस,
बीपी लेस, ईसीजी फ्लैट लाइन, उसको लाके हमारे ऑपरेशन थिएटर में रख दिया गया कि इसको ऑपरेट करना है। मुझे अभी भी वो समय, वो दिन ध्यान है दोस्तों। बाहर शोर मच रहा था, लोग रो रहे थे, उसकी फैमिली वाले थे, एंड वी रिससिटेटेड हिम। हमने उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर दोस्तों डाला, और डालकर हमने उसको ऑपरेट करना आरंभ किया। उसकी मैसिव हार्ट अटैक था, केवल 21 साल का लड़का। हमने उसके आर्टरीज में से थ्रोम्बस निकाला। थोड़ी देर बाद उसका ब्लड प्रेशर 510 से लेके 50-60 तक स्टेबलाइज हुआ। धड़कन उसकी आने आरंभ हुई, और अल्टीमेटली 1-1.5 घंटे के स्ट्रगल के बाद हमने सक्सेसफुली उसको ऑपरेट किया और आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट दिन जब हम गए तो वो लड़का बिल्कुल ठीक था, इंट्यूबेटेड था, लेकिन ही वॉज परफेक्टली फाइन, एज इफ जैसे कुछ हुआ ही ना। लोग बहुत खुश थे, डॉक्टर गुप्ता इट वॉज वेरी गुड एफर्ट एंड टेरिफिक, आपने एक 21 साल के लड़के की जान बचा ली। लेकिन दोस्तों वो मेरे जीवन का सबसे विचलित करने वाला दिन था। दैट वॉज मोस्ट डिस्टर्बिंग डे। मैंने कहा मेरा भारतवर्ष, 21 साल के लड़के को हार्ट अटैक, दिस इज नॉट व्हाट वी हैव बार्गेन्ड अवर लाइफ फॉर। इसको ना स्मोकिंग करता है, ना डायबिटिक है, ना डिस्लिपिडीमिया है, ना फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, पर इसको हार्ट अटैक हुआ क्यों है दोस्तों? यही सोच मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उनके पिताजी से कहा कि मैं इनकी फैमिली से, इनके वाइफ से बात करना चाहता हूं। मैरिड था, 4 महीने की डॉटर थी। तो उसके पिताजी मुझे अलग ले गए और उन्होंने कहा कि इनकी वाइफ नहीं आएंगी, आप हमसे ही बात करिए। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगी? कहते हैं दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ डाइवोर्स, 1 महीने बाद ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा और विनम्रता से कहा कि आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि वो यहां पर आ जाएं। ध्यान से सुनिए, वो लड़की समझदार थी, शी केम। 4 महीने की छोटी सी एंजल को दोस्तों लेकर आई, बहुत क्यूट सी बेबी, इमेजिन करो, 21 साल का लड़का। मैंने सबको बाहर कर, मैंने बिठाया दोनों को, वो बच्चे को भी एक्सट्यूबेट कर दिया था, बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या बात है, व्हाट हैज हैपेंड इन योर लाइफ? 7 डिजिट सैलरी, मर्सिडीज चलाते हैं, बढ़िया सा बड़ा फ्लैट है, या यूं कहें भौतिकता रूप से संपन्न है दोस्तों, सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। दिस इज हाउ वी डिफाइन सक्सेस ना, सब कुछ बढ़िया है। हुआ क्या है? कहते हैं सर हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वी हैव नेवर बीन एबल टू गिव टाइम टू ईच अदर। भागते ही रहे पूरी लाइफ में हम लोग, जब से आरंभ हुई है। 15 मिनट भी हम रोज एक दूसरे को नहीं देते थे। तो मैं मुस्कुराने लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सेपरेट होना चाहते हो जाओ। मैंने कोई उनको भाषण नहीं दिया, आई डिडंट टेल एनीथिंग टू देम। मैंने उनसे कहा मेरे लिए केवल 2 चीजें करोगे? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जी सर करेंगे। मैंने कहा इसकी जान बची है। तो मैंने कहा पहली चीज आप दोनों को करनी है कि केवल 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद तो आप सेपरेट हो जाएंगे, 1 महीने के लिए केवल 15 मिनट रोज एक दूसरे को देने हैं। एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है, और एक दूसरे के साथ समय बिताना है, रात का खाना साथ खाना है, दैट्स ऑल। दोनों ने एक दूसरे की तरफ शक्ल देखा, आंखों में बात की, कहते हैं ठीक है सर, आपके कहने से 1 महीने के लिए हम लोग करेंगे। फिर दूसरी बात मैंने उनकी वाइफ को बोली, मैंने कहा 1 महीने में 5-4 ओपीडीज मेरी आती हैं, हर ट्यूसडे में ओपीडी में बैठता हूं, आपको हर ओपीडी में इसका हाथ पकड़ के मेरे पास ओपीडी में लाना है, बस दैट्स ऑल। तभी मैं इसको देखूंगा, वरना मैं नहीं देखूंगा, अकेले नहीं आना चाहिए। वो मुस्कुराने लगी, उसने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं जरूर करूंगी। दोस्तों वो दोनों आना आरंभ करे। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल दोस्तों आज बीत गए हैं। उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स वापस लिए हैं। 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है, एंड दे आर लीडिंग अ हैप्पी एंड अ वंडरफुल लाइफ। ये दोस्तों भारतवर्ष की संस्कृति है, ये हमारी ओरिजिनल जो हमारे संस्कार, जो हमारी वैल्यूज हैं, ये हैं दोस्तों। आज वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते करते जो हमारे मूल संस्कार हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पुरानी मान्यता है दोस्तों, जब हम उनको खो देते हैं। मुझे याद है मैं बचपन में आता 70s में, अपना बैग लिया, घर में ऐसे फेंका। मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो कहती थी कहां जा रहा है? मैंने कहा क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। वो कहती थी कोई बात नहीं, मोबाइल होता नहीं था उस टाइम पर। 6 घंटे 4 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ना फिक्र होती थी, ना चिंता होती थी। अब 5 मिनट के लिए जाओ तो मैसेज 10 आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, कहां हो, कैसे हो, मुझे फोन नहीं किया। दोस्तों ये संस्कृति थी हमारी, बैठते थे साथ में, परिवार में खाते थे। आज एक ही घर में हमने अनेकों घर बना डाले हैं, एक ही घर में अनेकों घर कनेक्टेड हैं, किसके द्वारा? व्हाट्सएप, फेसबुक और मोबाइल के द्वारा। दोस्तों मैं भी कभी कभी कहता हूं घर वालों की शक्ल देख लिया करो, अच्छे लोग हैं वो भी, इट्स वेरी नाइस टू इंटरेक्ट विद देम। दोस्तों ये आज हमारी संस्कृति कहां पहुंच चुकी है। दोस्तों उस दिन हमने अपने हॉस्पिटल लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स आरंभ किए, और इसको सुनना बहुत आवश्यक है। आज हमने 150 मरीज यंग हार्ट अटैक के, जिनकी उम्र केवल 18 से 30 साल थी, उनको हमने अपनी स्टडीज में रिक्रूट किया। यहां की लाइट्स को आप डिम कर दीजिए इसको। और दोस्तों उन लोगों को जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, उनके केवल तनाव को हमने मेजर किया।
साइको सोशल स्ट्रेस, वर्क फैमिली स्ट्रेस को हमने मेजर किया और उनकी जेनेटिक लेंथ यानी बायोलॉजिक एज को मेजर किया, जो क्रोमोसोमल लेंथ होती है उसको मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे सुनिए दोस्तों। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 30 साल, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जब हमने इनकी जेनेटिक एज को देखा, इनकी बायोलॉजिक एज को देखा, इन बच्चों की बायोलॉजिक एज थी एक 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड दोस्तों, देयर जीन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी 18 से 30 साल के बच्चे के अंदर रह रही थी एक 60 to 90 इयर्स की जेनेटिक एज का व्यक्ति। मेरे मन में आया डॉक्टर मोहित ऐसा हो क्यों रहा है? हमने देखा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। जब हमने फर्दर एनालाइज किया, सिंगल मोस्ट पावरफुल फैक्टर फॉर दिस हार्ट अटैक वाज स्ट्रेस, साइको सोशल स्ट्रेस एंड लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रेजेंस ऑफ एंगर इन देयर लाइफ। देखिए दोस्तों, ये हमारी लाइफ आज पहुंच चुकी है। और जब हमने फर्दर एनालाइज किया तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में पर्पस नहीं है, जो क्रोध करते हैं, जिनके मन के अंदर अजीब अजीब प्रकार की सोच चलती रहती है, खुशी नहीं रहती है, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, परिवार के साथ बैठकर समय नहीं देते हैं, उन लोगों की टेलोमरेज यानी जेनेटिक एंजाइम कम होता है और जेनेटिक लेंथ, टेलोमियर लेंथ जो है वो कम होती जाती है, डिजीज एक्सप्रेशन बढ़ता जाता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जो भारतवर्ष की संस्कृति, हमारी योगिक संस्कृति है, वो लोग जो कि खुश रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग अपने जीवन में पॉजिटिव और सकारात्मक आशावादी आउटलुक रखते हैं दोस्तों, उन लोगों के जीवन में टेलोमियर लेंथ बढ़ती जाती है एंड दिस इज अ रिवर्सिबल फिनोमेना। व्हाट डज दिस शो? This shows that the single most important factor that governs our life is our soch, our vichardhara, our thoughts. Our thoughts can completely program our genes दोस्तों। हमारी श्रेष्ठ विचारधारा, हमारे पावरफुल संकल्प ही हमारी संस्कृति को, हमारे भविष्य का दोस्तों निर्माण करते हैं। That is the beauty that we have in our life. We have the power to regulate our genes. तो दोस्तों, टाइम्स मैगजीन ने तभी कहा था कि वाई योर डीएनए इजंट योर डेस्टिनी, द चॉइसेस दैट वी आर मेकिंग। आज बहुत जरूरी है दोस्तों, इस हाई टेक वर्ल्ड के अंदर भारतवर्ष की ब्यूटी क्या है? जहां वेस्टर्न वर्ल्ड हाई टेक अपने आप को कहलाता है दोस्तों, मूल भारतवर्ष ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर हाई टेक को हम लोग हाई टच के साथ, कंपैशन के साथ दोस्तों बैलेंस करते हैं। कंपैशन, करुणा, परिवार, एक वासुदेव कुटुंबकम की भावना दोस्तों, ये भावना हमारे भारतवर्ष का मूल आधार रहा है, हमारी संस्कृति रही है। इन भावनाओं को जब हम जीवन में जागृत करते हैं दोस्तों, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर लाइफ फॉर गुड हेल्थ इज अवर रिलेशंस, हमारे संबंध स्वयं और दूसरों के साथ दोस्तों कैसे हैं, यही हमारे जीवन का निर्माण करता है। तो दोस्तों, अपने परिवार, अपने विश्व, अपने देश, अपने समाज में सबके साथ श्रेष्ठ संबंध रखिए, इंटरैक्ट, हैव अ ग्रेट एंड अ गुड सोशल लाइफ। सकारात्मक और पॉजिटिव विचारधारा के साथ स्वयं भी खुश रहिए और अनेक लोगों को भी दोस्तों खुशियां बांटिए। मेरा तीसरा मैसेज जो आज मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, ऑल यंग इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ इंडिया आर हियर दोस्तों। माय थर्ड मैसेज इज व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, इट्स ऑन इट्स वे। सक्सेस इज योर बर्थ राइट दोस्तों। जीवन में जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो आपके लिए, आपके पास ऑलरेडी रास्ते में है दोस्तों। उसको केवल आपको स्वीकार करना है और स्वीकार करने के लिए श्रेष्ठ मनोबल और श्रेष्ठ शक्ति की आवश्यकता है। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, छोड़कर वहां से पढ़ाई जॉन हॉपकिंस से, और यहां पर आकर मैंने सोचा कि मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करूंगा, तो उस समय भारतवर्ष में केवल 5 सीटें दोस्तों होती थी। 5 सीटों में मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स और मेरे सभी कोलीग्स एग्जाम दे रहे थे। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैंने भाई एक बारी मैं अटेम्प्ट दूंगा, मेरे पास दूसरे अटेम्प्ट देने की हिम्मत नहीं है, एमडी मेडिसिन हूं, उसी से काम चल जाएगा। तो मम्मी ने मुस्कुराते हुए बुलाया, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। बहुत पॉजिटिव आउटलुक की व्यक्ति हैं वो। उन्होंने कहा 5 सीटें हैं, मुझे ये बताओ तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि मम्मी मुझे तो एक ही चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले तो 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो। और दोस्तों वो मेरे लिए एक मंत्र की तरह बन गया। What I did is मैंने अपने डेस्क के आगे लिख लिया कि ये 1 सीट इज फॉर मी, ये सीट मुझे ही मिलेगी दोस्तों। मैंने मात्र 6 महीना उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई की। 9 फरवरी 2002 को मेरा एंट्रेंस एग्जाम था, सैटरडे का दिन था, मुझे अभी भी ध्यान है।
मैं एग्जाम देकर वापस आया 12:30 बजे, 9:30 से 12:30 बजे मैं बाहर निकला, और आप जैसे यंगस्टर्स थे, मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स थे, उनके पास में गया। आई वॉन्ट टू डिस्कस माई पेपर विद यू। दोस्तों, एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ पेपर डिस्कस नहीं किया, और उनका केवल एक उत्तर था, डॉक्टर गुप्ता आप घर जाइए, आपको पेपर हम घर भिजवा देंगे विद सॉल्यूशंस सो दैट यू कैन गिव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इन अ प्रॉपर वे। आई वॉज डिसहार्टेंड, आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं दोस्तों घर चला गया और मैंने कहा कोई बात नहीं, आई गॉट अ हेयर कट, आराम से जाके आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना ही नहीं था। दोस्तों 15 दिन बाद रिजल्ट आया। आई हैड फर्स्ट रैंक इन माई कंट्री। माई percentage was 95% and second rank was 78% दोस्तों at that time. दोस्तों, that day I learned when you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, success has and will come to you always। दोस्तों, दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी सक्सेस को आपसे दूर नहीं ले जा सकती है। असाध्य को भी साध्य करना, असंभव को भी संभव करना दोस्तों आप में से एक एक व्यक्ति की, ये किसी व्यक्ति की यूनिक नहीं है, ये एक माइंडसेट को यूनिक है दोस्तों। इस माइंडसेट को आपको डेवलप करना है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो आपको चाहिए उसको मांगो, अपने संकल्पों के ऊपर बिलीव करो, उसके लिए वर्क करो दोस्तों, एंड सक्सेस विल बी ऑफर्ड टू यू इन द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल वे। दोस्तों, ये भारतवर्ष की योगिक संस्कृति, ये शक्ति हमारे पास है दोस्तों, ये शक्ति हम सबके माइंडसेट के अंदर है। तो दोस्तों, कभी भी आज के बाद अपने मन को प्रोग्राम मत करना। What happens? Why our success goes away? आज अपनी विचारधारा को देखिए हम कैसे करते हैं। अपने परिवार, आज सभी लोग फैमिली में बैठे ना, तो देखो अपने परिवार में क्या कहेंगे। आई डोंट थिंक मुझे मिलेगा, मुझे तो सक्सेस मिलती ही नहीं है, मैं तो हमेशा बीमार ही रहता हूं, मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और आपका ब्रेन अंदर बैठा बैठा केवल एक काम करता है, ब्रेन कहेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इट्स अ ब्यूटिफुल तथास्तु मशीन। It will just say tathastu, it will absorb the thought. This is scientific. Dr. Eric Kandel, nerve cells that fire together, they wire together. Nobel Prize मिला इनको इसके लिए। तो जो संकल्प आप अंदर करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक नया पाथवे बनाएगा, और पाथवे बना के आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर देगा। आप 21 दिन करिए कि मैं बीमार हूं, बीमारी को आप अट्रैक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू एंड विल बिकम ओल्ड। दोस्तों, इसलिए बहुत आवश्यक है टू प्रोग्राम योर ब्रेन विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव माइंड। यही सकारात्मक विचारधारा है दोस्तों, यूनिक विचारधारा, जो भारतवर्ष और उसकी संस्कृति को यूनिक बनाती है। G20 इज ऑल अबाउट इनकलकेटिंग पॉजिटिविटी इन अवर माइंडसेट, इन अवर लाइव्स एंड इन अवर सोसाइटी। दोस्तों, we have to create this beautiful mindset in our life. So my third message to you is, whatever you want to create outside must first be created in your mind. जो आप चाहते हैं स्वयं के लिए, अपने देश के लिए दोस्तों, उसको अपने मन में ब्लूप्रिंट की तरह यहां पर क्रिएट करिए। It will automatically happen in your life. Nobody will be able to take away your success from you. Every thought is creating your future दोस्तों। My fourth message to you दोस्तों, my fourth and powerful message to you is a very beautiful message. Small changes creates great miracles. दोस्तों, परिवर्तन एक दिन में कभी नहीं आने वाला। अगर आज हम अपने आप को, अपने देश को, संस्कृति को बाहर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये एक दिन का इवेंट नहीं होगा, ये एक साल का इवेंट नहीं होगा दोस्तों, ये एक प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के अंदर हमें अपने आप को डालना पड़ेगा, और ये प्रोसेस है हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी विचारधारा। अगर आज आप सोचेंगे कि आज हम मोटिवेट होकर जा रहे हैं और जाकर हम अपने जीवन को बदल डालेंगे, दोस्तों इससे नहीं होगा। ये एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना रह सकता है, लेकिन जब रोज आप इस सकारात्मक विचारधारा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे, तो ये एक चेंज आपके जीवन में मिरेकल्स कर देगा। इसको मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया दोस्तों। जब 2001 में मैं अमेरिका से आया था, तो उस समय मेरा वेट 96 kgs था दोस्तों। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। आपको विश्वास नहीं होगा, आई विल शो यू माय पिक्चर्स। देखिए, ये मेरी पिक्चर है डिज्नीलैंड ऑरलैंडो 2001 की पिक्चर। आई एम स्टैंडिंग हियर। दोस्तों, जब मैं वापस आया तो जब कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, किसी ने मजाक में बोल दिया कि डॉक्टर मोहित आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। मेरे घर के ही कोई थे। ये बात दोस्तों मुझे बुरी लगी, एंड उस दिन मैंने अपने जीवन को परिवर्तित किया।
मैंने आज दिन तक किसी जिम ट्रेनर को ज्वाइन नहीं किया, कभी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग स्मॉल चेंजेस। और वही 6 महीने जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली चेंज किया। एंड बाय 9th February when I had my DM cardiology exam, I lost 23 kgs. Completely my thyroid, hypertension, diabetes disappeared and I was completely fit दोस्तों। लेकिन ब्यूटी ये नहीं थी दोस्तों, 2002 का वो चीज आज 21 साल भी आज के दिन तक मैं अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मेंटेन करता हूं विदाउट एनी फेल। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं व्यायाम, कोविड, नॉन कोविड, इट डजंट मैटर एट ऑल, एक भी दिन मैंने व्यायाम नहीं मिस किया। तो दोस्तों अगर मिरेकल्स लाइफ में क्रिएट करने हैं, इट हैज टू बी अ प्रोसेस। केवल दोस्तों बोलने से नहीं होगा, केवल पेपर पर लिखने से ही नहीं होगा, लेकिन आप सब जब अपने जीवन के अंदर परिवर्तन की अग्नि को ज्वलनशील करेंगे दोस्तों, यह परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, यह प्रोसेस दिखेगा। भारतवर्ष को श्रेष्ठ बनाना है, अग्रणी बनाना है, जो ऑलरेडी बढ़ रहा है दोस्तों, तो उस सब के लिए आप सब लोगों की सहयोग की उंगली आवश्यक है। दिखाते हैं पुराना पर्वत, कृष्ण के टाइम में जब आया था तो सबने अपनी उंगली दी थी दोस्तों। ये उंगली केवल हाथ की उंगली का गायन नहीं है, ये हमारी सहयोग की उंगली, हम सबकी एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की उंगली दोस्तों। तो इसलिए जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन ही हमारे लाइफ को मिरेकल्स की तरह क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट दोस्तों। माय 5th मैसेज टू यू इज थिंक पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव। दोस्तों नकारात्मक और नेगेटिव माइंडसेट हमेशा आपको नकारात्मक और नेगेटिव लाइफ ही देगा। अगर हमारी सोच ही इसी प्रकार से है तो सोच हमेशा हमारी लाइफ को उसी डायरेक्शन के अंदर लेती चली जाएगी। 2014 जब मैं खेल रहा था बैडमिंटन का, मुझे ध्यान है, मैं स्पोर्ट्स में भी ठीक था, स्टेट लेवल पर खेलता था, तो सडनली मुझे बहुत तेजी से इंजरी हुई और मैं गिर गया। मुझे दोस्तों पांव के अंदर सिग्निफिकेंट रेडिएशन आरंभ हो गई और आरंभ हुई। 1 साल तक मैं ट्रीटमेंट लेता रहा, बेस्ट ऑर्थोपेडिशियन सब लोगों ने कहा, बट इट डिड नॉट रिकवर। लोगों ने कहा सर्जरी करा लीजिए, शायद ठीक हो जाए, लेकिन इसमें रिकवरी होने के चांसेस मुश्किल हैं, आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग ये तकलीफ रहेगी। 20 जनवरी 2014 को अल्टीमेटली मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई दोस्तों। आई हैड 6 स्क्रूज विच वर इम्प्लांटेड इन माई स्पाइन। ये मेरा स्पाइन का एक्सरे दोस्तों। आज भी मुझे खड़े होने में, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने अपने आप को संकल्प दिया कि मुझे वापस इस पर आना है, मुझे स्पोर्ट्स के अंदर दोबारा जाना है। उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोस्तों मैंने अपने आप को कराया और मात्र 6 महीने के अंदर वापस अपने आप को फुल एक्टिविटी के अंदर दोस्तों मैं लेकर आया। ये सोच है दोस्तों। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और डिफिकल्टीज हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। कोई भी लाइफ नहीं, आप लोगों की लाइफ में भी, हर एक की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है दोस्तों। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना, उन समस्याओं को अपॉर्चुनिटीज में क्रिएट करना। लोग देंगे समस्याएं, सिचुएशंस देंगी आपको प्रॉब्लम्स, वो आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपकी टांग नीचे खींचेंगे दोस्तों, लेकिन उनको करते हुए भी अपने व्यक्तित्व, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना, पॉजिटिव बनाना, ये सोच लेकर हमारा भारत देश को और स्वयं को हमें दोस्तों आगे बढ़ाना है। थिंक पॉजिटिव। केवल आशावादी व्यक्तित्व ही अपना स्वयं और विश्व का, भारतवर्ष का दोस्तों निर्माण कर सकता है। क्रिटिसाइज करने वाले तो पूरी दुनिया में बैठे हैं दोस्तों, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए, यही श्रेष्ठ नव निर्माण दोस्तों विश्व और भारतवर्ष का होगा। दोस्तों छठा मैसेज जो आज मैं आपको समय अनुसार देना चाहता हूं, वी डिसाइड हाउ वी फील। आपके जीवन के अंदर आपकी भावनाओं का, आपके जीवन के अंदर आपकी सोच का निर्णय दोस्तों कोई भी नहीं करता। आपके जीवन के अंदर आपकी सोच को केवल आप ही चला सकते हैं। सोचिए, गाड़ी आपकी है और व्यक्ति दूसरा चला रहा है। आज ऐसा हमारा भाव स्वभाव हो चुका है। आज लोगों की बातें, हमारे पास्ट की बातें, उनकी ओपिनियन हमारे मन को कुंठित कर देती है। आप देखिए, अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, उसकी बात को हम मन में पकड़ कर बैठ जाते हैं। ईर्ष्या, घृणा, नेगेटिविटी दोस्तों, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। आज एक व्यक्ति की एक बात को हम मन में रखेंगे, वो मन में रखते हुए बात हमारे जीवन के अंदर हमको एक गार्बेज बॉक्स हमारे मन को बना देती है। आप बोलिए कि अगर ऐसी बातों को हम अपने मन में स्थान देंगे तो हमारा मन खुशी और शांति से कहां परिपूर्ण होगा। आज मैं आप सब लोगों से एक एक्सरसाइज करने को कहता हूं। सभी लोग करेंगे मेरे रिक्वेस्ट से, केवल 3 दिन के लिए विनम्र निवेदन करता हूं। करेंगे सभी लोग? यस और नो? हाथ उठाइए अगर करेंगे तो। हाँ, आज के दिन इन सब की वीडियो निकाल लीजिए ताकि बाद में मना ना करें। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों। ये एक्सरसाइज अगर आपने करी, लाइफ आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। 3 दिन के लिए केवल एक एक्सरसाइज जो हमको करनी है, वो एक्सरसाइज है
कि 3 दिन में जब आप घर को साफ करेंगे, अपने किचन, बाथरूम और ड्राइंग रूम को साफ करेंगे, सारे कूड़े को इकट्ठा करके 3 दिन के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम में उसको सजाना है दोस्तों। दैट्स ऑल। वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे हमारे घर में बदबू आएगी, इंफेक्शन फैलेगा। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए? जोर से बताइए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? जोर से बताइए, घर की सफाई रोज या कभी कभी? तो दोस्तों, जब घर की सफाई रोज होनी चाहिए, तो उस घर के अंदर रहने व मन की सफाई हम लोग रोज क्यों नहीं करते हैं? आज मन के अंदर ईर्ष्या, मन के अंदर घृणा, मन के अंदर हेट्रेड, जेलेसी, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस, इन भावनाओं को रखकर दोस्तों हमारा विश्व कैसे आगे बढ़ेगा? एक श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना, एक श्रेष्ठ भारतवर्ष की रचना दोस्तों एक पॉजिटिव आउटलुक से होती है। अगर हमारे मन में झूठ की चाशनी है और मुख में मिठास है दोस्तों, तो वो कभी भी परिवर्तन नहीं ला सकती है। अगर हमें परिवर्तन लाना है तो इन भावनाओं को, क्रोध को, इरिटेशन, हेट्रेड, जेलेसी, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, इन सबको हमें हटाना पड़ेगा दोस्तों। यह हमारा व्यक्तित्व नहीं है। भारतवर्ष इन चीजों के लिए नहीं जाना चाहता है। ये हमारी ही अपनी क्रिएटेड है दोस्तों, हमारे संबंधों में क्रिएटेड है। आज बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो दोस्तों, लाइफ को कंफर्टेबल बनाइए। अपने जीवन में क्रोध की जगह प्यार को, अंडरस्टैंडिंग को, करुणा को, इन सब भावनाओं को दोस्तों, एप्रिसिएशन को जब हम लाते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाता है। रोज अपने मन को पावरफुल बनाइए, रोज अपने मन को श्रेष्ठ बनाइए। सोचिए एक ऐसा समाज, सोचिए, कल्पना करिए यहीं पर बैठे बैठे एक ऐसा समाज, एक ऐसा विश्व, एक ऐसा भारत, एक ऐसा परिवार जहां सब एक दूसरे को हाथ देकर सपोर्ट दे रहे हो। सोचिए एक ऐसा समाज जहां खुशियां और शांति हो दोस्तों। ये केवल परिकल्पना नहीं, ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। आज G20 के द्वारा भारत विश्व को जब वासुदेव कुटुंबकम का भावना बताता है दोस्तों, तो वो वासुदेव कुटुंबकम केवल भाईचारे का मुखौर्णिक संदेश नहीं है दोस्तों, ये संदेश है इन श्रेष्ठ भावनाओं से ओतप्रोत, इन श्रेष्ठ भावनाओं से भरा हुआ दोस्तों, जिसमें प्यार, शांति, सुख और पवित्रता, ये संदेश भारत पूरे विश्व को देता है। भारत का इतिहास ही इसी चीज का गायन दोस्तों करता है। इसलिए दोस्तों, सदा अपने जीवन को, अपने मन को प्रेम और शांति, श्रेष्ठ भावनाओं से दोस्तों सदा परिपूर्ण करिए। दोस्तों, मेरा 7वां संदेश और बहुत सुंदर संदेश दोस्तों वो है कि क्या आप सहयोग देते हैं या सलाह देते हैं। यह कहानी बहुत सुंदर है दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया की, और सुनिएगा इस कहानी को क्योंकि हमारे समाज पर बहुत लागू होती है। एक छोटी सी चिड़िया का एक बच्चा समुद्र के अंदर गिर गया और वो समुद्र के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि हे समुद्र, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। तो समुद्र ने कहा, चल हट, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसी चीजों में थोड़ी ना लगा रहूंगा, तू जा अपना काम कर। तो चिड़िया को गुस्सा आया और उसने बोला कि समुद्र, तूने ठीक नहीं किया, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को खाली कर डालूंगी। और उसने चोंच से लेकर उसके पानी को खाली करना आरंभ कर दिया। सारे बच्चे वहां पे, सारी चिड़ियां वहां से जा रही थी और उससे बोली कि अरे ये तू क्या कर रही है, ऐसे थोड़ी ना समुद्र खाली होगा। उसने कहा, इसने मेरा बच्चा लिया है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने कहा, ऐसे खाली नहीं होगा। तो चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। सारे बच्चे, सारे चिड़िया के जो थे वो सब वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, ठीक कहती है, और हजारों चिड़िया वहां पर आ गई और उस समुद्र को खाली करने में लग गई। समुद्र फिर भी हंस रहा था, उन्हें पता था ये नहीं खाली कर पाएंगी। थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ जी जा रहे थे। गरुड़ जी वहां पर आए, पौराणिक कहानी है। उन्होंने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो सब चिड़िया मुस्कुराकर बोली, गरुड़ जी सलाह नहीं, सहयोग चाहिए, दे सकते हैं तो आप भी आइए हमारे साथ। तो गरुड़ जी ने भी छोड़ा और वहां पर आकर उनके साथ लग गए और पानी को खाली करने में लग गए। अब जैसे ही गरुड़ जी ने पानी खाली करने की तो विष्णु जी के मन में कौतूहलता हुई। उन्होंने कहा, भाई तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरी तो सवारी तू है, ऐसे नहीं खाली होने वाला, तू समझ गरुड़, इससे काम नहीं चलेगा। तो गरुड़ ने भी कहा, भगवान क्षमा करना, इस समय सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। तो विष्णु जी का भी मन जागृत हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, ऐसा है तो चल मैं ही चलता हूं। विष्णु जी भी वहां पर आ गए और जैसे ही वहां पर आए, समुद्र घबरा गया कि अब तो खाली होकर ही रहेगा और उसने तुरंत बच्चा लौटा दिया दोस्तों उसको। तो दोस्तों, आज जीवन में
जीवन में सबसे सस्ती चीज जो है वो सलाह है, क्योंकि एक मांगो तो हजारों मिलती हैं, और जीवन में सबसे महंगी चीज सहयोग है, क्योंकि हजारों मांगो तो एक मिलता है। दोस्तों, विश्व परिवर्तन के लिए आज भारतवर्ष को सहयोग चाहिए। हमें सलाह देने वाले तो दोस्तों बहुत लोग बैठे हुए हैं। आज अगर परिवर्तन की अग्नि को ज्वलनशील करना है दोस्तों, तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए, क्रिटिसाइज मत करिए, नकारात्मक मत बोलिए, सकारात्मक सोच से आगे बढ़िए। भारतवर्ष G20 के द्वारा भारतवर्ष यही संदेश देना चाहता है सुख और शांति का, कि हम आपस में जब हाथ मिलाते हैं तो विश्व परिवर्तन एक सपना नहीं, एक रियलिटी दोस्तों बन जाता है। और मेरा आखिरी संदेश दोस्तों जो आप सब लोगों को है, वो है कुछ समय योग और मेडिटेशन के लिए जरूर निकालिए, बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सवेरे से शाम तक हम लोग भागते रहते हैं, सवेरे से शाम तक हमारी गाड़ी चलती रहती है, लेकिन मेडिटेशन और योग की जो प्रक्रिया है ये हमारे मन को चार्ज करती है। जैसे आप लोग मोबाइल को लेते हैं, सवेरे और शाम मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार योग की ये प्रक्रिया जो है हमारे मन, हमारी आत्मा को शक्ति देती है। और आज मैं आपको साइंस के द्वारा दिखाऊंगा अगले 5 मिनट के अंदर ही दोस्तों केवल, कि ये कैसे हमारे जीवन में पावरफुल चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट्स को देखिए, एक मेरे अपने जीवन का और एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट इन जनाब का, जिनका नाम था मिस्टर स्टोमैटिस मोरेटिस। दोस्तों, ये यूएस आर्मी के वॉर वेटरन थे, यूएस आर्मी के वॉर वेटरन, जिनको टर्मिनल लंग कैंसर से 1976 में डायग्नोज किया गया जब ये रिटायर हुए। इनको कहा गया कि आपके पास मात्र केवल 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, इससे ज्यादा आप जी नहीं सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर मरना ही है तो अमेरिका में तो मेरे बरियल के $300 लगेंगे, तो मैं अपने टाउन इकारिया जाता हूं, ये रियल स्टडीज हैं दोस्तों जो सब पब्लिश्ड हैं, वहां पर मेरे बरियल के मुश्किल $10 से $15 लगेंगे। और ये ग्रीस के उस टाउन इकारिया में दोस्तों चले गए, वहां गए, वहां जाकर इन्होंने विनयार्ड्स प्लांट किए, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाया, पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाया, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट किए, रोज एक्सरसाइज करते थे, अच्छी सोच रखते थे दोस्तों। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल निकल गए। 5 साल बाद इनको स्ट्रेस होने लगा कि यार मुझे तो मरना था, मैं अभी भी जीवित हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। दोस्तों, 10 साल बाद ये व्यक्ति दोबारा अमेरिका गए टू मीट हिज डॉक्टर्स, और 10 साल बाद जब ये अमेरिका गए तो जिन डॉक्टर्स ने इनको कैंसर डायग्नोज किया था वो सब मर चुके थे उस टाइम तक, दे ऑल वर डेड एट दैट टाइम, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर। ये दोस्तों व्यक्ति वापस आए और इन्होंने 102 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ा, और इस व्यक्ति को कहा जाता है ऑन द रिकॉर्ड द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। जिस जगह पर ये रहते थे, जिस जगह पर ये रहते थे दोस्तों, उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई, जिनको ब्लू जोन्स के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द प्लेसेस इज इकारिया इन ग्रीस, ऐसे लोमा लिंडा है, ओकिनावा इन जापान, ऐसे केवल 5 प्रदेश हैं दोस्तों। उनकी ब्यूटी क्या होती है? उनकी ब्यूटी वही होती है जो हमारे प्राचीन भारतवर्ष की संस्कृति है दोस्तों। उनकी ब्यूटी है कि वो लोग मेडिटेट करते हैं, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता है, जैसे हमारे किसान भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का होता है। दिन और रात वो लगी रहती हैं दोस्तों, दिन और रात कार्य करती रहती हैं। उनकी ब्यूटी होती है कि वो लोग अच्छी पॉजिटिव और वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, और उनकी ब्यूटी होती है दोस्तों वो नींद का भरपूर उपयोग करते हैं। दे हैव अ ब्यूटीफुल पावरफुल माइंडसेट। ये हमारे ही जीवन के तो पुराने संस्कार है दोस्तों, जो आज वेस्ट हमको लाके दे रहा है। आज G20 के द्वारा हम पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं दोस्तों कि योग जो है ये भारतवर्ष की देन है पूरे विश्व को दोस्तों। बाहर से हमें समझने की जरूरत नहीं, हमारे ही परिवर्तन के द्वारा, सोच के द्वारा ये देन हम भारतवर्ष के द्वारा पूरे विश्व को ये देना चाहते हैं। सार्थक बनाइए इस चीज को दोस्तों, अपने जीवन में अपनाकर उस भौतिकता की रेस से तनिक बाहर निकलकर दोस्तों इसको अपने ही जीवन में अपनाइए। ऐसा ही कुछ दोस्तों मेरे ही जीवन में हुआ जब 2003 में ये मेरे साथ हुआ, और अल्टीमेटली 2005 के अंदर मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई। और ब्रेन की सर्जरी होने के बाद मात्र 6 महीने बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए, आप देखिए मेरे ब्रेन में क्या हुआ। मेरे ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया, एक और लेजन आ गया। देखिए सेरिबेलम के अंदर डॉक्टर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड दे सेड, अमेरिका, बैंगलोर, दिल्ली, कि डॉक्टर मोहित आपका ब्रेन इसके लिए ऑपरेट नहीं किया जा सकता। दिस वॉज लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। 16 टैबलेट्स, बेस्ट मेडिसिन इन दी वर्ल्ड जो थी वो मैं ले रहा था। इमेजिन एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर्स, बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट, लेकिन एवरीबडी हैड गिवन देयर हैंड्स अप दोस्तों। वो समय था जब मैंने राजयोगा मेडिटेशन, जब बचपन से ब्रह्मा कुमारी जाता था, ब्रह्मचर्य का फॉलो करता था, लेकिन वो समय था मैंने सोचा कि मेडिटेशन और योग जो भारतवर्ष की ब्यूटी है उसको अपने ऊपर उपयोग करने का ये सार्थक समय है दोस्तों। मैंने 1 साल के लिए योग की प्रक्रिया को, मेडिटेशन की प्रक्रिया को अपने ब्रेन पर यूज करना आरंभ किया दोस्तों, विद माय बिलीफ सिस्टम।
और दोस्तों 1 साल रोज ये संकल्प लाता कि आई एम पावरफुल, मेरा ब्रेन बीमारियों से बिल्कुल ठीक है। इमेजिन एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर और एक स्पिरिचुअलिस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन अपने जीवन में लाके इसको टेक्निकली यूज करना, और एक ही इंग्रेडिएंट था, वो इंग्रेडिएंट था दोस्तों बिलीफ सिस्टम कि मुझे ये करना ही है। डॉक्टर्स कहते थे मोहित स्कैन करा ले, प्रॉब्लम हो जाएगा, हेडेक होता था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना, मुझे 1 साल इसको करने दो। दोस्तों जनवरी 2006 ये मेरे एक्चुअल स्कैन्स हैं, मैंने इसका आरंभ किया और देखिए 3 जनवरी 2006, और 1 साल बाद जब मैंने अपने ब्रेन स्कैन्स को रिपीट किया, देखिए मेरे ब्रेन में क्या हुआ, माय लेजेंड कंप्लीटली डिसअपीयर्ड आउट ऑफ माय ब्रेन। दोस्तों कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। दोस्तों योग केवल बात करने की चीज नहीं है, जब आप इसको अपने जीवन में विश्वास के साथ पालन करते हैं, इसको अपनाते हैं दोस्तों, आपका जीवन एक सक्सेस स्टोरी बन जाता है, आपका जीवन एक मैजिकल स्टोरी दोस्तों बन जाता है। और ये शक्ति मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए यूनिक है। आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस लीजिए, आपको बिजनेस चाहिए, बिजनेस लीजिए, आपको जो चीज अपने संकल्पों और उसके द्वारा अट्रैक्ट करनी है उसको करिए। एक ही इंग्रेडिएंट है, विश्वास करिए अपने संकल्पों पर, विश्वास करिए कि ये करके ही मैं रहूंगा। ये संकल्प, ये तपस्या जो हमारे पुरानी ऋषि मुनि करते थे दोस्तों, वो तपस्या क्या होती है? वो तपस्या केवल कठोर शरीर को कष्ट देना नहीं है दोस्तों, यथार्थ तपस्या होती है अपने संकल्पों को संकल्पबद्ध होकर श्रेष्ठ बनाना। और क्यों यह वर्क करता है? क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन जो कि अनबैलेंस्ड है, देखिए इस चीज को, मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम की इमेजेस, ये एक इम्बैलेंस ब्रेन वेव है। मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद आप देखिए आपके ब्रेन वेव्स के अंदर सुंदर बैलेंस आ जाता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन में। और मात्र 20 मिनट 25 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा आपके ब्रेन हेमिस्फीयर्स राइट और लेफ्ट कंप्लीटली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। दिस गिव्स यू अ ब्यूटीफुल मेंटल एंड इमोशनल सिस्टम दोस्तों, अ परफेक्टली बैलेंस सिस्टम। जहां आज लोग कहते हैं कि हम लोग केवल कर्म पर बिलीव करते हैं दोस्तों, वो उनको केवल 50% सक्सेस देगा, क्योंकि कर्म करने से हमारा केवल लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो कि एक्यूरेट है, एनालिटिकल है और रीजनिंग है। लेकिन दोस्तों जब हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं, मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो कि होलिस्टिक ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है, विविड ब्रेन है और पीसफुल ब्रेन है। ये हमारे संपूर्ण सिस्टम को समन्वयता में दोस्तों ला देता है। ये है भारत की पद्धति दोस्तों, ये है हमारी शक्ति, ये है हमारी ब्यूटी दोस्तों। दिस इज यूनिक टू आवरसेल्व्स। ये हमारे माइंडसेट की दोस्तों ब्यूटी है। हमारे शरीर के अंदर 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, और अगर हम चाहें तो मेडिटेशन के द्वारा इन सेल्स को कंप्लीट हार्मनी में क्रिएट कर सकते हैं। शांति की शक्ति, प्यार की, पवित्रता की, आनंद, ये हमारे ओरिजिनल बूटिंग फोल्डर्स हैं, जो योग को प्रैक्टिस करने के द्वारा दोस्तों हमको हमारे जीवन में दोस्तों प्राप्त होते हैं। दोस्तों मैं आपको अंत में केवल एक ही बात कहूंगा कि आप जैसे ही बहुत सारे विद्वान लोग एक बारी एक महात्मा के पास गए और उससे बोले कि महात्मा जी हम अपने जीवन में कब भगवान को याद करें, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, हमारी लाइफ बड़ी बिजी जाती है। तो उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया, तुम ठीक बोलते हो, तुम केवल अपने मरने से एक ही दिन पहले भगवान को याद करना या मेडिटेट करना, उसी से काम हो जाएगा। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला पलटते कि महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उनमें से एक महात्मा ने तुरंत पलट के बोला, फिर तुम आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों अगर परिवर्तन लाना है, अगर चेंज लाना है आप सबको, तो वो कल नहीं होगा। मैं नहीं चाहता यहां पर कि आप कहें कि हमें अच्छा लगा, हमने सुना, लेकिन दोस्तों जो चीज सुनने में इतनी अच्छी लगती है, आप सोचो कि उसको जीवन में पालन करना, उसको अपने जीवन में अपनाना, वो कितनी श्रेष्ठता आपके जीवन में लाएगी, कितनी वंडरफुल जीवन हमारे लाइफ को दोस्तों बनाएगी। तो दोस्तों आज का ये जो दिन है, आज का ये जो दिन है, ये दिन आपके जीवन का पहला दिन होगा। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये दिन जो है आपके जीवन का पहला दिन होगा। आज का दिन आपके जीवन का पहला दिन होगा बचे हुए जिंदगी का। इसको कितना पावरफुल बनाना है, कितना वंडरफुल बनाना है, कितना श्रेष्ठ बनाना है, ये केवल आपके हाथ में है। भूतकाल एक कल्पना है, भूतकाल एक सपना है, भविष्यकाल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान दोस्तों अपना है। अपनी लाइफ को आज जीजिए और अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए अपने वर्तमान को श्रेष्ठ और पावरफुल दोस्तों बनाइए। कहा है ना किसी ने बहुत सुंदर से कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती।
दोस्तों, जीवन और चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, मन मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। गिरे हुए व्यक्ति को गिराना तो दुनिया करती है, हम सब भारतवर्ष के श्रेष्ठ निवासी हैं, व्यक्तित्व हैं दोस्तों। हर व्यक्ति को सहयोग का हाथ दीजिए, उदास मन के चेहरे पर खुशी लेकर आइए। यही सार्थक G20 का व्यक्तित्व जो है उसको मनाना होगा, यही संदेश पूरे विश्व के अंदर दोस्तों हम सबको देना होगा। मैं केवल 10 सेकंड के लिए आप लोगों को बोलूंगा कि साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप को इस सुंदर यात्रा पर लेकर जाते हैं। इस सुंदर यात्रा पर अपने आप को अनुभव करें कि जैसे मंदिर के अंदर एक सुंदर मूर्ति होती है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर मैं एक शक्तिशाली, शांत, परम पवित्र, सुखदायी कॉन्शियसनेस और आत्मा हूं। मन भी मुस्कुराता हुआ और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ अनुभव करें। मेरा एक एक संकल्प शांति, शक्ति और स्नेह से परिपूर्ण है, क्रोध और इरिटेशन से मुक्त है। अनुभव करें मेरा संबंध सुखदायी है, जीवन सफलता स्वरूप है, शांति मेरा अस्तित्व है, पवित्रता मेरा स्वरूप है, प्यार मेरा निजी गुण है। ओम शांति। Thank you so much for the patient hearing. Thank you so much. नीचे जाना, नीचे चले। Thank you for such a thought-provoking session, sir. It was a privilege having you with us today. थैंक यू अनाहिता। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हुए मैं हमारी माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल एवं प्रोफेसर आर.पी. मामगई से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे माननीय अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह एवं उत्तराखंडी शॉल भेंट स्वरूप प्रदान करें और उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती प्रीति सरन को सम्मानित करते हुए प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। श्रीमती प्रीति सरन को सम्मानित करते हुए प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। डॉक्टर अलका मित्तल को सम्मानित करते हुए डॉक्टर अलका मित्तल को सम्मानित करते हुए डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को सम्मानित करते हुए प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और प्रोफेसर मामगई।
डॉक्टर अंशुमन गुप्ता को सम्मानित करते हुए प्रोफेसर ममगई और सुरेखा। इसकी आवाज़ नियति। मिस नियति सिंह को सम्मानित करते हुए नेशनल आप अनाउंस कर दो, सब लोग खड़े हो। नेशनल एंथम के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। आप आ जाइए सर। इस इवेंट का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, थोड़ा देर बैठ जाइए प्लीज, विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स। एक इम्पॉर्टेंट पहलू इस इवेंट के थे प्री इवेंट क्विज एंड ऐसे कंपटीशन। इसमें जो है हम लोगों ने दून यूनिवर्सिटी ने हमारे बच्चों ने अमन, मनसा ध्यानी, खुशी यादव, शिवा सूद, ऋतिक पांडे, ऋषभ तिवारी एंड विपासना चंद्रा, कहाँ पे हैं ये आ जाएं थोड़ी देर। इन लोगों ने जो है बहुत प्रोएक्टिवली इस क्विज और ऐसे कंपटीशन को करवाया। ये इंटर यूनिवर्सिटी इंटर इंस्टीट्यूशनल क्विज एंड ऐसे कंपटीशन था, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक यूपीएस, एमकेपी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, डीएवी कॉलेज, ग्राफिकरा हिल यूनिवर्सिटी और दून यूनिवर्सिटी, इन इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थियों ने, करीब 150 विद्यार्थियों ने अपने पर्चे भरे। उसमें से मेरे ख्याल एक्टिवली बाद में जो फाइनल सिलेक्शन में 40 बच्चे आए और 40 बच्चों में फिर जो है हमने कंपटीशन करके कराया। और इसमें जो बच्चे आए फाइनलिस्ट, उनका मैं नाम लूँगा, वो प्लीज़ यहाँ पे आए। ये जो हिंदी में ऐसे कंपटीशन था, हिंदी में ऐसे कंपटीशन में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है मनीषा भारती फ्रॉम डीबीएस कॉलेज। सेकंड जो है रनर अप जो है इस हिंदी कंपटीशन में संजना ठाकुर फ्रॉम एमकेपी पीजी कॉलेज। दोनों आप मंच पे आए। मैम से अनुरोध है कि बच्चों को जो है ट्रॉफी से सम्मानित करें। इंग्लिश में जो विनर्स हैं इंग्लिश ऐसे कंपटीशन में, फर्स्ट पोजीशन में आशीष कुमार फ्रॉम यूपीएस आए हैं। रनर अप है अर्पिता डोभाल फ्रॉम एमकेपी पीजी कॉलेज। क्विज कंपटीशन में जो फर्स्ट पोजीशन में आए, इट हैज बीन सिक्योर्ड बाय शुभ्रांशु कैरिया एंड रोहन बिंजोला फ्रॉम दून यूनिवर्सिटी। हैव ए बिग अप्लॉज फॉर देम। रनर अप इज अर्पिता डोभाल एंड प्रियदर्शनी चूक फ्रॉम एमकेपी पीजी कॉलेज। और इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद दूंगा हमारी फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस की हेड को, प्रोफेसर चेतना पोखरियाल को, जिन्होंने इसको प्रोएक्टिवली इसमें सपोर्ट किया, और एमकेपी कॉलेज को कि जहां से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हमारे पास है। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर अनाउंस कर दो। हेलो, उसको खोलो। हेलो,